बधाई जिनकी हो रही उनके प्रति तो मेरी सद्भावना है ही कि वो जीवन के जहां भी रहें सफलता की ऊंचाइयों को छुए। और बाकी जो सदस्य आज हम सब लोग जो अलग हो रहे हैं, जो यहाँ रहेंगे वर्तमान, उनके लिए भी मेरी मंगल कामना है। और आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने इन 6 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ जो कुछ अनुभव हुए उसको मैं साझा कर सकूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती कांता करदम। धन्यवाद सभापति महोदय। सांसदगण, मैं पहले तो आभार प्रकट करूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का और अपने प्रदेश का नेतृत्व का और केंद्र के नेतृत्व का, सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस सदन में भेजा और मुझे इस सदन से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं इस सदन में आई थी तो बहुत वरिष्ठ यहाँ सदस्य भी थे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वर्गीय जेटली जी और सुषमा जी को सुनने का मौका मिला। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, ये भी हमें बहुत दुख और कष्ट हमें भी बहुत हुआ, और मुझे नहीं सभी को हुआ, पूरे देश को हुआ कि हमारे बीच से इतने जल्दी चले गए। मैं इस सदन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने बहुत अनुभव यहाँ मुझे मिला है, और मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे चेयर पर बैठने का आपने मौका दिया और महिलाओं को जो सम्मान आपने दिया है उसमें से मैं भी एक हूँ। देश में मुझे कई कमेटी में भी रखा गया और उस कमेटी के माध्यम से, SC/ST कमेटी के माध्यम से और भी कमेटियों के माध्यम से मुझे देश भर में जाने का मौका मिला। और मैं अपने समाज में, जब SC/ST समाज में मैं जाती थी कई अलग अलग प्रदेश में, तो उन गांव में उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी कुछ समस्या थी, उनका समाधान करने का भी मौका मिला इस कमेटी के माध्यम से। और मैं इस बात की भी यहाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कार्यकाल में ही ये नया सदन बना, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि यहाँ सदन में हम लोगों को नए सदन में आने का मौका मिला है। और यहाँ से बहुत अनुभव यहाँ मैं सीख के जाऊँगी, और मैं जितने भी यहाँ हमारे बहन और भाई हैं उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मौका मिला है। अगर कहीं मुझसे कहीं भी कुछ भूल हो गई है किसी भी स्थान पर तो मुझे क्षमा करेंगे। और बहुत सारे बिल जो मेरे सामने भी 370 धारा पर तलाक और नारी शक्ति अभिनंदन जो बिल हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे कार्यकाल में जो ये बिल आए हैं और जो पास हुए हैं, ये मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली में मान्य हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनिल बालूनी। धन्यवाद सभापति जी। आज इस फेयरवेल की समय पर मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, भारत के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को राज्यसभा में एक मौका दिया आप लोगों के मध्य बैठने के लिए। और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे बहुत सारे अवसर हमको दिए जिसका मुझे गौरव हो। ऐसे बहुत सारे अवसर दिए जब आर्टिकल 370 पर मत डालने का मुझे मौका मिला। महोदय, मैं जब हम लोग छोटे थे, संघ के स्वयंसेवक थे या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे या जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य थे, तो हम लोग नारे लगाते थे, शहीद हुए जहाँ मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और जब उसके उन्मूलन का समय आया
उस वक्त उसके लिए मतदान मैंने किया। मेरे लिए वो क्षण बहुत ही ना भूलने वाला क्षण है और रोंगटे खड़े हो जाने वाला क्षण है। महोदय, मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक ऐसे कालखंड में इस सदन का सदस्य रहा हूँ जब सपनों को हकीकत में तब्दील होते मैंने देखा है। महोदय, ऐसे बहुत सारे क्षण आए कि जब सपने हकीकत में बदलते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, जब नारी शक्ति अधिनियम का मामला आया, ऐसे बहुत सारे पल आए जब मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली समझता रहा। महोदय, ऐसे बहुत सारे क्षण आए जब बहुत ही भावुक पल हम लोगों के लिए थे। कोरोना का समय ऐसा आया, आप में से बहुत साथियों को पता होगा कि उससे पूर्व मैं एक बड़ी गंभीर बीमारी में उलझ गया। तो ऐसे बहुत सारे पल हम लोगों के लिए आए जब हमने इस सदन को लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चैम्बर्स में होते हुए देखा। ऐसा भी क्षण आया जब विजिटर गैलरी पे सांसद बैठे थे। ऐसा भी क्षण आया जब वर्चुअल सदस्य भी वर्चुअली इस संसद में शामिल हो सके। तो ऐसे बहुत सारे भावुक पल आए जिनके लिए मैं सदा इस क्षण को, इस कालखंड को याद रखूंगा। महोदय, मैं ज़रूर एक बात कहना चाहता हूं कि इस कालखंड में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए और इसीलिए इन सपनों को जब मैं कहता हूं हकीकत में बदलने का समय आया, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पल आए जब हम लोग इस सत्र में, इस सदन में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बिल पास किए। महोदय, मैं और बहुत सारी चीज़ें कहना जरूर चाहता था इस मौके पे, लेकिन समय का अभाव है। मैं आपका यहाँ पर जितने हमारे राज्यसभा के कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, उनका, इस सदन के सभी सदस्यों का, सभी अपने साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये पल यहाँ हम लोगों ने गुजारे हैं। और महोदय, एक बात में लाइटर वे में जरूर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस सदन में सबसे ज़्यादा अनिल नाम के लोग हैं। अनिल बलूनी, अनिल अग्रवाल, अनिल जैन, अनिल देसाई, अनिल हेगड़े, और ये सारे लोग रिटायर हो रहे हैं। तो हमको आपका प्रोटेक्शन जरूर चाहिए कि इतने सारे लोग एक साथ रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ अनिलों पे आपकी कृपा दृष्टि रहे, इसके लिए जरूर आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Anil Baluni, will you please indicate the rule under which you are seeking this protection from me? Honorable members, our house sitting today will be up to 6 p.m. and we have to transact business in respect of bills also. I would urge the members, having full respect to their sentiments, to be brief. Shri Sakaldeep Rajbhar. आदरणीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले मैं इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का प्रणाम करता हूं। आज आपकी आज्ञा से उस सदन में अपने विदाई भाषण के लिए खड़ा हूं। मेरे जैसे पार्टी और संघ के साधारण कार्यकर्ता को उस सदन में 6 वर्ष तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के आला कमान एवं संघ के लोग को हृदय से प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा मैं माननीय सभापति जी, माननीय उपसभापति जी एवं लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सभी सदस्यगण का मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन 6 वर्षों में मैंने अपने संसदीय जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का भरपूर प्रयास किया। विभिन्न उतार चढ़ाव देखा, बहुत कुछ सीखने को अवसर मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश
देश जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। माननीय मोदी जी के सराहनीय कार्य, चाहे अयोध्या का मंदिर हो या कश्मीर का 370-35A हो या नारी शक्ति बंधन हो, पाकिस्तान का स्ट्राइक हो, न्याय सदन हो, कोरोना हो, 80 करोड़ गरीबों के लिए राशन हो, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड हो, सभी उनके कार्य जो बहुत ही सराहनीय हैं, जिनका जितना भी सराहा जाए वो कम होगा। और इसके अलावा मैं भगवान से कामना करता हूँ कि देश ही नहीं विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। आज मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ कि देश आगे बढ़े, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सदस्यगण सभी सदस्यगण आगे बढ़ें और मैं भी सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। जो भी यहाँ रहे फलते फूलते रहे, सभी लोगों के दीर्घायु की कामना करता हूँ। थैंक यू। श्री अजय प्रताप सिंह। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। Oh, sorry Ajay Pratap ji, you took some time. Please. माननीय सभापति महोदय, युवावस्था में मैंने एक कार्टून देखा था। आप तो अभी भी युवा लग रहे हैं। संभवतः वो कार्टून 19 का था। उस कार्टून में प्रश्न किया गया था कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए पॉलिटिशियन, और नीचे जवाब दिया गया था। जवाब में राजनेता की शव यात्रा जा रही थी और नीचे लिखा था दिस इज द रिटायरमेंट एज ऑफ ए पॉलिटिशियन। तो आज इस सदन से जरूर हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सेवा समाज सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि उस कार्टून में परिभाषित किया गया था, तो अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम देश की सेवा करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस समाज की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू। सभापति महोदय, एक मिनट। सभापति महोदय, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली इस अर्थों में हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी विरासत में मिली है, और लाइटर मोड में कभी कभी अपने मित्रों के बीच में कहता भी हूँ कि मेरे बाप की पार्टी है। और इसी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमने जो भी सपने देखे थे, मेरा सौभाग्य है कि जब मैं राज्यसभा का सांसद बनकर इस सदन का हिस्सा बना, वो सारे के सारे सपने हमारे पूरे हुए हैं। हमने सपना देखा था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बन गया। हमने नारे लगाए थे कि धारा 370 हटे, 35A हटे, ये धाराएं समाप्त हो गई। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। केवल एक कसक रह गई है कि समान नागरिक संहिता के लिए भी हमने बहुत अपने नारे लगाए हैं, बहुत तेज आवाज में आंदोलन किया है। वो कसक जरूर रह गई है जो इस कालखंड में और इस हमारे कार्यकाल में पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, आने वाले सदस्य इस काम को पूरा करेंगे। मैं इस सदन का हिस्सा बना, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देता हूं। इस सदन में आपका संरक्षण मुझे मिला, पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का संरक्षण मिला, उपाध्यक्ष श्री हरवंश जी का संरक्षण मिला। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मध्य प्रदेश में हमारी साथ संवार हमारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, श्री शिवराज सिंह जी ने किया, हमारे संगठन मंत्री श्री भगवत शरण माथुर जी ने किया। मैं इन सबको स्मरण करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी।
Dr. Amar Patnaik. Time for you to audit yourself. Sir? Time for you to audit yourself. Thank you, sir. So as I stand before you today to bid farewell to this esteemed house, it is with a profound sense of gratitude and humility to the people of the state, to you, sir, to my leader, the President of Biju Janata Dal, the Chief Minister of Orissa, Sri Naveen Patnaik ji, whom and particularly the people of my state, whom I have had the honor to represent for the past 4.5 years. Chairman, sir, when I was deliberating upon the decision to join politics, or public life as they say, in the midst of a career in civil services in which I had already spent 28 years, and which was extremely enriching and satisfying for me, I was confused since I had 10 years to go before retirement. When this confusion continued to prevail, I found solace in Mahatma Gandhi's talisman. If you are in doubt, think of the poorest man, and if your decision is going to help him, then take that decision. And thus I opted to join politics, later to find that this was the guiding principle of my leader, Honorable CM of Orissa, Sri Naveen Patnaik ji, who has always advised us to follow and espouse similar values, not just in politics, but even in our daily lives. It isn't that I was not serving the poor and the downtrodden in my earlier career as a bureaucrat. However, transitioning into politics provided me a direct avenue to work with the people and influence policy in favor of the poor and the downtrodden in a much more direct manner at the higher echelons, that is the Parliament of India. So during my tenure of 4 years, 9 months as a parliamentarian, I have not only tested the hollowness of my knowledge and explored the depth of my ignorance, but also constantly enriched my wisdom from each and every member of this House and the chair. I have learned from seniors as well as from juniors, following my belief that the pursuit of knowledge has no expiry date. Not only have I spoken on several bills and topics, but also I have raised the issue of Orissa on various issues, starting from farmers, starting from the issue of special category state, the issue of giving special protection to the tribals, to the various downtrodden people of Orissa, and to increase various kinds of connectivity in Orissa. Sir, as I bid farewell to this esteemed House, I extend my heartfelt gratitude to all members whose insights have enlightened me, whose experiences have inspired me, and whose sacrifices has humbled me. Together, we have debated, deliberated, and sometimes disagreed, but always in the best interest of our great nation at heart. Thank you. Sir, even after I retire, I am certain that my commitment to serving the people will continue, transcending any specific role that I may have. My commitment for service to the people of Orissa and the country shall continue in whatever role that is assigned to me by my leader. I am reminded of my favorite quote, that is the great revolutionary poet of Bengal, Qazi Nazrul Islam, which is my favorite quote, sir, so which I'd like to quote here. This is in Oriya, sir, it's a translation. Mujhe mahabidrohi rana klanta mujhe sei dino hebi shanto jebe atyacharira kharga krupana bhima rana bhume rani bani jebe atyacharira kharga krupana bhima rana bhume rani bani jebe utpiritara krandana rolo bhima rana jebe utpiritara krandana rolo akase batase dhwani bani jebe utpiritara krandana rolo akase batase dhwani bani mujhe mahabidrohi rana klanta mujhe sei dino hebi shanto. Thank you so much, sir, and thank you so much for giving me the opportunity to speak and your wisdom, sir. Thank you so much. Shrimati Vandana Chauhan. So for a person like me who never ever dreamt or even aspired to be in the political arena, this has been a very, very fulfilling journey for the last 30 years. So in 1992, I got first elected to the Pune Municipal Corporation. 3 terms there, 15 years as a corporator, mayor of the city of Pune, for a short period MLC in Maharashtra, and 2 terms here in the Rajya Sabha. So I have to express my sincere thanks to our tall leader, Shri Sharad Pawar, whose vision of empowering women really pulled me into this arena.
And I'm really obliged to him and the party for having given me this opportunity. So there have been a lot of learnings for me at all these steps. The learnings which have enriched my own life. It has helped me to translate it into action in the community and further serve my little modest bit in nation building. So in the last 12 years, I have feeling of a mixed baggage of emotions. So one is gratitude to the chair in which you sit today, sir. Hamid Ansari ji, Venkaiah Naidu ji, yourself, sir, the deputy chairmen, Professor P.C. Kurian, our very dear Harivansh ji, the vice chairmen, who have been extremely cordial in conducting this house and giving us this opportunity in several ways. So even the chairmen of the committees have done a great deal to bring out the best from us. So the second thing is nostalgia, because it's a house which carries a lot of history, the Constituent Assembly, and after that, tall leaders. So naturally, being a part of that is something to feel very proud of. Feeling of contentment, sir, that I was able to contribute in my little way to the legislation and policies which were being discussed here. Sir, with all these bags comes one more bag. The feeling that I could have done better if that bell did not buzz after 3 minutes. Which I know, sir, you are constrained to do, but this is in the lighter vein, sir. So I wish to thank all my colleagues who have brought a lot of richness to the intellect. Sir, I still remember when I came as a new member in the House, whenever there was a speech made, I believe it was good because otherwise I wouldn't get chits. Jairam Ramesh ji, Derek ji, Tiruchi Shiva, who also guided me that you speak very fast, go slower. So these were the kind of wonderful inputs we got to make sure we deliver better. Our elder sister like Jaya ji, Sonal Mansingh ji, my friend Rajni ji, Ami ji, Fauzia ji, all these members who have been great support to all of us. Also, sir, the staff and the administration, which has been very, very cordial. Members of my party, the Punekars, my city, who I have a lot of strong bonds. They have always supported me. And last but not the least, my family, who has stood by me through thick and thin. So the last thing I would only like to say is we will be watching the Sansad TV when we are sitting at home or when the Sansad is on. And I would really like to see that we will have better coordination between the treasury benches and the opposition, whoever may be sitting wherever, and every criticism is taken as a piece of a viewpoint, and this is the essence of democracy, and that is something that I would like to really feel for. Thank you, sir, very much. Shri Javed Ali Khan. धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं इस सदन से, उन सब के जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु होने के लिए और समाज की निरंतर सेवा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर, मैं भी 2020 में रिटायर हुआ था और 19 महीने करीब मैंने रिटायरमेंट की लाइफ गुजारी है। मैं 2-3 बातें बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा। रिटायरमेंट के बाद एक्स एमपीज को कुछ पीड़ाएं होती हैं। मसलन आज हम एमपी हैं, हम टेलीफोन करते हैं और हमारा रेल में रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अपना आई कार्ड लेकर के काउंटर पर लाइन में लगना ही पड़ता है। कृपया रेल मंत्री जी को मैंने कहा भी था, आप भी निर्देशित कर दीजिए कि एक्स एमपीज को टेलीफोन पर रिजर्वेशन की सुविधा दे दी जाए। जब कार्ड से ही होना है, पैसा नहीं देना है, तो ये सुविधा उनको दे देनी चाहिए। जब पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया था एमपीज के लिए, और सब एमपीज की और एक्स एमपीज की आईडी बना दी गई थी कि इससे आप ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। 2018 में वो शुरू करना था, लेकिन आज 2024 आ गई है, करीब 6 साल हो गए
वो ऑनलाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ। मैंने रेल मंत्री जी के दफ्तर में जाकर के निवेदन किया था कि कम से कम आप अगर टेलीफोन पे नहीं दे सकते तो एक्स एमपीज को और एमपीज को ऑनलाइन सुविधा दे दीजिए। दूसरी बात क्या है जो मैंने महसूस की, ये सीजीएचएस के जो बिल वगैरह एक्स एमपीज देते हैं, पहाड़गंज तक के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं एक्स एमपी होने के बाद। मैंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से निवेदन किया कि एक्स एमपीज के लिए एक काउंटर एनेक्सी में कहीं खुलवा दीजिए जहां सब बिलों का आदान प्रदान हो जाए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट वगैरह वहां से मिल जाए। मैंने सुना है कि वो शायद हो गया है। और तीसरी आखिरी बात एक्स एमपीज की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं सर कि आपने कई बार सदन में कहा कि एक्स एमपीज जब दिल्ली आएंगे तो उनके एकोमोडेशन की जिम्मेदारी सचिवालय लेगा, लेकिन अभी तक सचिवालय में कोई डेस्क या कोई आदमी ऐसा डेजिग्नेट नहीं है जिससे संपर्क करके एक्स एमपी यहाँ वेस्टर्न कोर्ट की सुविधा ले सकते हों। कृपया ये भी कर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक्स एमपीज जो आज होने जा रहे हैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I may tell you, honorable member, we have a structured mechanism and we have gone to the extent of making available rooms in double digit to members of parliament, ex-members of parliament, when they have made a request. It's very structured. Shri Harnath Singh Yadav. Harnath ji, सभापति जी, मैंने अपनी जीवन यात्रा धुर देहात के मिट्टी के कच्चे मकान से, बरसात में चुचयाते हुए फूस के छप्पर से, कांटों भरी पगडंडियों से, घुटनों तक कीचड़ भरी गलियों से, खेत से, खलिहान से, गांव की सौंधी मिट्टी की पवित्र सुगंध से प्रारंभ किया है। मान्यवर, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, आज के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और अपने समस्त नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। महोदय, आज विदाई का अवसर है, माहौल कुछ अलग है, परंतु मैं अपने मन के कुछ भावों को अवश्य प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय, राजनीतिक क्षेत्र का एक विचित्र चित्र देखने में आ रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक मान मर्यादाओं, परंपराओं का कोई मूल्य नहीं रह गया है। सत्य असत्य, नीति अनीति, धर्म अधर्म, पुण्य पाप आदि के मध्य जो रेखा होती है वह मिटती चली जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए और देश के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। महोदय, मेरा मानना है कि अपनी मातृभाषा का सम्मान देश का सम्मान है और मातृभाषा के प्रति अवमाननापूर्ण व्यवहार का अर्थ है कि हम अपनी मूल जो धाती है, मूल जो पूंजी है, उससे किसी न किसी रूप में अलग होते चले जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक समृद्ध विरासत से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने हिंदी भाषा सहित देश की समस्त मातृभाषाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंगीकार करने के लिए समय समय पर सदन में उठाने का प्रयास किया है। महोदय, मैं इस अवसर पर आपका और पूर्व सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू साहब का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस सदन को अनेक झंझावातों के बावजूद, अनेक प्रकार की समस्याओं के बावजूद बहुत ही कुशल रीति से सदन को चलाने का प्रयास किया है और सभी सांसदों का जो है विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने दोनों सदनों के वर्तमान और पूर्व सांसदों की एक भावना प्रकट करना चाहता हूँ। महोदय, पुराने संसद भवन में के केंद्रीय सभागार में पूर्व सांसदों को बैठने के लिए, मिलने के लिए, मिलने जुलने की सुविधा प्राप्त थी, परंतु नए संसद भवन में यह सुविधा नहीं दिखाई दे रही है।
आज पूर्व सांसदों को नए संसद भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह स्थिति अत्यंत वेदनापूर्ण है, कष्टकारक है और मान सम्मान के विपरीत भी प्रतीत होती है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित ही इस समस्या पर कोई सकारात्मक कार्रवाई स्पष्ट करें। और अंत में मान्यवर मैं 4 पंक्ति बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। दस्तूर है ज़माने का पुराना, दस्तूर है ज़माने का पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। रहो जहाँ अपनी छाप ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाता रहे आपका तराना। और जियो तो ऐसे जियो कि जाने के बाद सारा जहाँ कहे कि जियो तो ऐसे जियो। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री अमीर रंजन विश्वास। Sir, at the very outset, I thank my party and my leader, Srimati Mamata Banerjee, from the core of my heart for this greatest of opportunities to be a part of this grandest temple of world's largest democracy, this parliament. So this journey of 6 years has been one of great learning experience from great and distinguished people who came here from all walks of life. Their contribution in this house, as sir you often say, in the form of debates, dialogues, discussions and deliberations, have been greatly enriching for me as a first-time parliamentarian. Sir, I consider myself very lucky as I had the great privilege of being in both houses, in both the parliament, the old one and the new one. Sir, I was witness to the 250th session of Parliament. Sir, it was the period of the 75th year of independence and of the Republic. Sir, it was the period which was also graced by 2 honorable presidents of this great Republic, 3 honorable prime ministers, 2 former and 1 our current Prime Minister, Shri Modi ji, and sir, 2 honorable chairmen in Rajya Sabha. Sir, your and your predecessor, Shri Venkaiah Naidu ji's able guidance from the chair and witty remarks from time to time were highly commendable. His one remark I vividly remember, one could be retired but never tired, to which a reference was being made by our Chief Whip Shri Shugendu ji this morning, shall be the catchline for all of us retiring today. Sir, in this point, I find it very pertinent to mention Sir Lord Alfred Tennyson in his poem From the Passing of Arthur, in which he said, "The old order changeth, yielding place to new, and God fulfilled himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world." Sir, this reflects that no matter how good anything is, change is the essence of nature. This essential change is taking place today in the form of 68 honorable members retiring today. And sir, of course, new members will come in. This will infuse new energy into this house once again. Sir, Swami Vivekananda, in his famous quotation, "Hey Bharat bhuliyo na," which translates as, "O India, never be oblivious," had referred to this Indian society as Shai Virat Mohamayar Chhaya Matro, meaning this society is only the shadow of this greatest form of Shakti, Mahamaya. I am sure those retiring today, whether coming back or not, shall definitely be engaging themselves for the cause of this great nation in capacity as a member of parliament or in any other capacity, but chiefly in the capacity of a patriot out of zeal to keep serving this nation, which Swami Vivekananda had referred to as My India, the India Eternal. Sir, I'm greatly thankful to all the MPs of this house, all officers and staffs of this parliament, as all have been always ever helpful, cooperative and courteous. Especially, I would like to thank my party leader in this house, Shri Derek O'Brien ji, and our Chief Whip, Shri Shugendu Shekhar ji. Thank you. Sir, I soulfully pray for the good health and well-being of all I have come in touch with during this glorious journey of mine. Thank you, sir. Thank you. Lieutenant General.
Dr. D.P. Watts, retired. General, briefly. माननीय सभापति जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कल मुझे आपने इस आसन पे बैठने का भी मौका दिया। फिर मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका, फ्रॉम होम आई लर्नड। जब मैं यंग अफसर पोस्टेड था कश्मीर में, हसीन वादी में, तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ सेटल हों, क्योंकि लक्ष्मी चंद ने कहा है कि जड़े आदमी रहने लाग जा, उड़े ही उसका घर हो जा। तो फौजी तो रहते हैं हर जगह। मुझे ये नहीं पता था कि माननीय मोदी जी 45 साल के बाद मेरा भी बटन दबाएंगे 370 धारा और 35A को निरस्त कराने में। मैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट हूँ, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का कमांडेंट रहा, द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री। अभी भी एडवाइज़र हूँ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज का, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। मगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एजुकेशन के प्रसार में बाधा बनी हुई थी। मैंने भी 100 इंस्पेक्शन कराने का टॉर्चर बर्दाश्त किया। मुझे ये नहीं पता था कि मोदी जी मेरे हाथ से उसको भी निरस्त कराने का बटन दबाएंगे और पार्लियामेंट में मैं बोलूँगा। सभापति जी, आपके पास भी मैं खाप पंचायतों का केस लेके आया था। मुझे यूँ नहीं पता था कि आप मेरे इमीडिएट बॉस होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो पता नहीं था, जो मैंने चाहा वो तो नहीं हुआ, बट समथिंग बेटर देन दैट हैपेंड एंड आई एम ग्रेटफुल टू General, all. I am not your immediate boss. And if at all I am your boss, then I am not immediate. It will be ultimate. Sir, I stand corrected. Sir, whatsoever you feel correct is correct. Thank you, sir. Being a doctor, I will say sometimes some acrimonies among us people, but to me, genetically from Kabul to Kanyakumari, we look to be the same people. And my wish is कि धारा 370 तो गई, 371 भी जाए, हर एक हिंदुस्तानी हर जगह काम कर सके और हर जगह सेटल हो सके, और यूरोप की तरह हमारा बर्रे सगीर के लोग, इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते हैं, जैसे आज यूरोप है, ऐसा भी कभी हो। जय हिंद। श्री कैलाश सोनी। माननीय सभापति जी, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को लोकतंत्र के सबसे बड़े पायदान पर आना एक बड़े सौभाग्य का विषय है। और हम सब जो यहां आए, ये तय है कि अपने पार्टी के कारण आए, और इसलिए हम सबसे पहले अपने पार्टी के नेता और इस राष्ट्र के जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और हमारे प्रदेश के नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और शिवराज सिंह जी को खूब साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, हम एक युग है राजनीति के। 1971 10 अगस्त यहां तिहाड़ जेल से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 20 माह तक, और जन सरोकारों के लिए मध्य प्रदेश का कोई जेल नहीं बचा जिसमें हम नहीं गए हों। छात्र जीवन से लेकर के आज तक हम जिन उद्देश्यों को लेकर के राजनीति में आए थे, ये सारे उद्देश्य 9 वर्ष के कार्यकाल में हम पूरे होते हुए देख रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है, राजनीति टोटकों से और नारों से हट करके इशू बेस्ड हुई है। राजनीति में हम सब जो चाहते थे, धारा 370 और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था, सबसे बड़ा सपना था कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, जरूरत है व्यवस्थाएं बदले और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। और माननीय मोदी जी हिंदुस्तान के वो जननेता हैं और वो
प्रधानमंत्री हैं कि जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार की दीमक को मिटाने के लिए जीरो। विजयपाल जी, थैंक यू सोनी जी। मैं आखिरी केवल 2 पंक्ति कहना चाहता हूं कि जिंदगी में ऐसा निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। भारत माता की। श्री विजयपाल सिंह। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। ब्रीफली नरेंद्र मोदी जी और उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, नड्डा जी, तमाम नेताओं को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ राज्यसभा में भेजा, और साथ ही जितनी भी पार्टियों के नेता हैं। हमारी पार्टी में अरुण जेटली जी नेता थे उस समय, अब हमारे बीच में नहीं हैं। थावरचंद गहलोत जी थे, अब पीयूष गोयल जी हैं। पक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी थे, आजकल खड़गे जी हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन सबसे कुछ न कुछ सीखने को हमको मिला है। महोदय, मैं तो एक छोटे से किसान घर में पैदा हुआ था, कोई राजनीति में आने का इरादा नहीं था। चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया, और जब तक वो रहे तब तक उनके साथ में रहा। और कितनी बार आंदोलन किए। गन्ना बेल्ट से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहाँ गन्ना 80% गन्ना ही होता है, कि हम कहते थे कि एथेनॉल गन्ने से बनना चाहिए, गन्ने के रस से, और वो पेट्रोल में मिले। लेकिन अब हम उस सपने को पूरा होता हुआ हमने देखा। मुझे किसानों के संगठन में जिले से लगा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष तक रहने का अवसर मिला, केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का भी अवसर मिला, और यहाँ उठाने के भी अवसर मिले। तो अब वो सारे इश्यूज़ जो किसानों के थे, पिछले वर्षों में काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ। एक छोटा सा दर्द जरूर लेके जा रहे हैं। जब हम ये बात करते थे तो हम कहते थे किसानों पर ही सारे प्रतिबंध क्यों? बागपत का किसान क्यों नहीं सोनीपत में जाके अपना धान बेच सकता? उन रेस्ट्रिक्शंस को समाप्त करने के लिए जितने पिछले 20 साल में कमेटी बनी थी, गुरुलाल की अध्यक्षता में, एस जैन की अध्यक्षता में, मोन्टिक अहलवालिया की अध्यक्षता में, या हमारे स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, या डॉक्टर अपने भूपेंद्र हुड्डा जी की अध्यक्षता में बनी, सबकी रिपोर्टों के आधार पर हम सब उसमें थे। सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर कानून बनाए गए थे, लेकिन वो कानून वापस लेने पड़े थे। और उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था साहब, पूरे देश में उस समय सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी, उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। ज़्यादातर किसान ये चाहते थे नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक सेंटेंस कहा, मुझे लगता था यदि वापस होंगे तो किसान बड़े पैमाने पर विद्रोह करेंगे, क्योंकि 80% किसान सब चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा देश हित में हम ये कानून वापस ले रहे हैं, किसान हित में हमने बनाए थे। तो इसके दर्द को हम जरूर लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं सब साथियों को जितने हमारे रिटायर हो रहे हैं सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सबका सहयोग। सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, मोदी जी ब्रीफली। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और श्री नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे बाई इलेक्शन में 3.25 साल के लिए राज्यसभा के अंदर भेजने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको इतना मौका पार्टी ने दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली में, 6 साल करीब लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल में रहने का मुझे मौका मिला है। और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक उप मुख्यमंत्री के नाते श्री नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है। तो सभापति महोदय, मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने का मौका मिला है। और मैं आज के अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि राजनीति में तो कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में चाहे तो वो आजीवन कार्य कर सकता है। तो मैं अपना संकल्प व्यक्त करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूँगा। और अंत में एक छोटा सुझाव है मेरा कि जिस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों के सदस्यों की उपस्थिति में होता है,
क्या बजट भाषण ये राज्यसभा के लोगों को टीवी पर देखना पड़ता है, तो क्या बजट भाषण भी वित्त मंत्री का ये दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में नहीं हो सकता है क्या? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को, मुझे 33 साल तक लगातार राजनीति में रहने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री सैयद नासिर हुसैन। नासिर, briefly. Yes, sir. Sir, thank you for the opportunity. Sir, मुझे राज्यसभा में मौका मिला मेरे पार्टी के तौर से, after having a long stint in student politics and youth politics. I was elected 8 times to the student union in different colleges and universities in a row. I was actually preparing to contest for an assembly election from Ballari in Karnataka. Then all of a sudden I got this phone call. My party leader, Mallikarjun Kharge Sahab, Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, and that time in charge of the state, K.C. Venugopal ji, and my elder brother and well-wisher Randeep Singh Surjewala ji. Siddaramaiah ji was Chief Minister then, Dr. Parmeshwar was our PCC President. They all, without even me asking for it, they gave me a chance to be a member of the Rajya Sabha of this August House. I am thankful to all of them for giving me this opportunity. सर, हम लोग ने यही पढ़ा था, सुना था, देखा था, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मैं एज ए मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी यहाँ पे मैं राज्यसभा में प्रवेश किया। हम लोगों ने यही देखा था कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का एजेंडा आता है उनके बिल्स के रूप में, और अपोजिशन उन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए जो बिल्स के रूप में नहीं आते हैं और देश के लोगों के हित में होते हैं, और स्पेशली उन मुद्दे जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए वो क्योंकि उनके लिए अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो बिल्स के रूप में लाते नहीं, तो हम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं और मेरे पार्टी के दूसरे एमपीज़ और दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ हम लोग सब मिल के अलग अलग जो रेलेवेंट रूल्स थे, उस रूल्स के तहत उन तमाम मुद्दे जो गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे पावर्टी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे मणिपुर वाला मुद्दा हो, चाहे चाइनीज़ एग्रेशन वाला मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने अलग अलग रेलेवेंट रूल से उठाने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों ने जस्टिस करने की कोशिश की उन तमाम मुद्दों के साथ, लोगों के इस देश के लोगों के साथ, और कई टाइम उन मुद्दों को के ऊपर बहस करने की भी का अवसर भी अपोजिशन मेंबर्स को मिला, हम लोग को भी मिला। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मुद्दे अकोमोडेट नहीं हुए, इसीलिए हम लोगों को कई टाइम थोड़ा अग्रेसिव भी होना पड़ा, उससे काफ़ी हम लोगों ने सीखा। लेकिन ताज्जुब की ये बात है कि जो है डेमोक्रेसी जिसके बारे में एक टाइम कहा जाता था कि इस सदन में और इस हाउस में और उस हाउस में प्राइम मिनिस्टर खुद आके बैठ के उनके खिलाफ जो बात होती थी, गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात होती थी, उसको खुद आके बैठ के सुना करते थे। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि एक गवर्नमेंट के एमपी के बारे में जब बात हो रही थी, उसको बचाने के लिए 146 एमपी को सस्पेंड किया गया था। ये मुझे लगता है कि इस लेवल पे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी चीज़ देखने को यहाँ पे मिला है। मुझे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि 6 साल में जो टाइम मिला, आपसे भी काफ़ी सीखने को मिला, आपके पहले जो चेयरमैन साहब थे उनसे भी सीखने को मिला। बहुत सारे हमारे मित्र, नए मित्र हुए अपोजिशन पार्टीज में, गवर्नमेंट की तरफ से भी। मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ में अगर मेरी पार्टी में जो मौका मिली तो फिर वापस आऊँगा। अगर मौका नहीं मिला, जहाँ पे भी जिस रोल में भी होगा, उन तमाम मुद्दों के लिए जो मैं खड़ा हुआ था, उन मुद्दों के लिए उस रोल में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उस असाइनमेंट के साथ में मैं हर जगह खड़ा रहूँगा। बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर आपके चेहरे की चमक दमक बता रही है कि शायद आप आ रहे हैं। श्री कुमार केतकर।
Thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me to speak. But please allow me also, and also it will forgive me for taking a contrarian view and not just being protocolish of thanking everybody. As a journalist, I have covered Parliament sessions from the journalist gallery. And the atmosphere that I saw as a journalist then, for many years, is totally different than the atmosphere that I actually came to see as a member of Rajya Sabha. I had never thought that I will ever become a member here, from there to here. I have never seen such polarized house in my entire journalistic career. And this polarization, full of hate and nafrat, I think I had never experienced, despite whichever party was in power. I think that is the atmosphere which I did not like, and I must record that even the insulting and humiliating approach or humiliating statements or humiliating observations towards Pandit Jawaharlal Nehru, even Indira Gandhi, even after mentioning Bangladesh a few times, never it was mentioned that it was Indira Gandhi's leadership which helped Bangladesh get liberated and India having a completely different South Asia, India becoming member of South Asia. I think that kind of ungrateful approach towards the Nehrus and Gandhi and even Rajiv Gandhi, who introduced the idea of 21st century and technology missions, I think was completely ignored while mentioning about the new century. On 15th August 1947, we did not get freedom only for the body of the country. We also had the full freedom, and the soul was liberated in 1947, not on 22nd January 2024. I think that kind of gratefulness, that kind of gratitude should have been there. That I find extremely missing. And as a journalist, I had covered, and therefore I regret to say that next time, whether I come or not is immaterial. I am mostly not coming. But the point is, next time when the new Rajya Sabha comes or new Lok Sabha comes, some kind of gratitude towards our leaders, towards our 75 years contribution, towards Nehru's, Gandhi's. After all, Nehru was selected not by his own. Nehru was chosen by Mahatma Gandhi himself to lead the country. And that kind of approach, that kind of concern should have been shown by the House. This House, unfortunately, did not show that. I am thankful to you for giving me this opportunity, and thankful particularly to Sonia and Rahulji for choosing me to come to Rajya Sabha. So while thanking all others here, colleagues here, and the colleagues in the ruling party, I think with those words I will close, but I will hope that next time the Parliament, Rajya Sabha as well as Lok Sabha is not as hateful, as full of vengeance and revenge, but also full of genuine bonhomie, which I have seen in Central Hall. Now Central Hall has disappeared and bonhomie has also disappeared. That bonhomie must be introduced again. That is what I expect and I hope. Thank you very much. I don't want to say on this occasion, but Mr. Ketkar is a distinguished journalist. He must have seen in the House. Mr. Ketkar must have witnessed in the House, in public domain, from responsible members, the kind of language and words that have been used against your chairman. And it was great pain to me that no one from this side reacted. To call the chairman cheerleader of a political party is ultimate in taking a low dip. I would have expected that you would take equitable view of things. You ignored what you saw before your eyes. We have interacted also, and that we have to digest so many things. If you would go as a journalist, sit on your table and find out what has emanated on a public platform and what I have suffered, I am sure people would introspect on that also. Sri Rajmani Patel. माननीय सभापति जी, आपने इस अवसर पर हमें
बोलने का, विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन लाखों अमर शहीदों के चरणों में नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ादी के बाद इस देश में प्रजातंत्र का मंदिर और भारत का संविधान मिला। मैं उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हम एक छोटे किसान के परिवार के सदस्य के रूप में राजनीति में आया था और सेवा भावना के आधार पर सेवा को ही अपना अभिष्ट मान करके सेवा किया। गरीब, पिछड़े, दलित, किसान की आवाज़ के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा और इसी संघर्ष को देख करके हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विशेष करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो आज देश के युवाओं की अगुवाई कर रहे हैं, उन समस्याओं से लड़ रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमें इस सदन में आने का मौका मिला। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सदन में आने के पहले राज्य में था, मंत्री रहा, विधायक रहा, लेकिन इस सदन में पहली बार आने का मौका मिला। उसके पहले कुछ सपने देखे थे और कुछ कल्पनाएं किया था। पुराने सदन के मंदिर को देख करके, उनकी कार्यवाही को देख करके सपना देखते थे कि इस सदन में जाएंगे जहां जनता के द्वारा, जनता की सरकार जनता के लिए काम करते हुए नजर आएगी और जहां जनता की समस्याओं को सदन पर रखने का अवसर मिलेगा और उसका समाधान भी होगा। संविधान के साये में सभी को समान अवसर मिलेगा, उनके हक और अधिकार तथा स्वाभिमान और सम्मान की गारंटी मिलेगी। लेकिन मंदिर देख करके ऐसा लगा, माननीय सभापति महोदय, ने कहा था कि महलों की नाग फनी हंसते है, महलों की नाग फनी हंसती है, घर की तुलसी रोती है, कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई सूरज बांधे सोता है। माननीय जनता द्वारा जनता की सरकार न हो करके अगर कुछ लोगों के लिए काम करने लगे तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। माननीय सभापति महोदय, यहाँ तो सपनों को भी तोड़ा जाता है, मान अधिकारों को छीना जाता है, स्वाभिमान और सम्मान को भी दबाने का प्रयास होता है। माननीय सभापति महोदय, जब किसानों का कर्ज और बिजली का बिल बकाया रहने पर उनको जेल भेजा जाता हो और पूंजीपतियों का कर्ज माफ करता हो, जहां ऐसी व्यवस्था दिखे कि फिल्मों को टैक्स फ्री और कफन पर जीएसटी लगाया जाता हो, माननीय सभापति महोदय, कर्जा लेकर के व्यक्तिगत छवि बनाने में खर्च को देश के सम्मान करार दिया जाता हो, प्रश्नों का समाधान करने के बजाय प्रश्नों में पैदा करने वाली पार्टी तथा संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जब नजर आई, माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से वो सपने टूटते हैं। थैंक यू राजमणि जी। जिधर ये साहब ने कहा था, थैंक यू, अभी हमारे इमरान साहब बैठे, उन्होंने बात कही शायर कि जिधर से गुजरो, जो सम्मान है कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, अबे तो तुम अपेल भी तुम, दलेल भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। माननीय सभापति महोदय, ये प्रजातंत्र के मंदिर से जो आमदन की कल्पनाएं जुड़ी हुई है, उसके बाद एक सेकंड माननीय, आज तो माननीय सभापति महोदय 2 मिनट का समय दे दो, ऐसे नहीं मिलता है, सदन में कभी अपनी बात नहीं कह पाते, आज कह रहा हूँ विदाई के अवसर पर तो राजमणि जी समस्या क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में रहूं या न रहूं, लेकिन सभे बुजुर्ग बुद्धिजीवी अनुभवी सांसदों से जो प्रेरणा मिली है, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। जहां भी रहूंगा न्याय की लड़ाई लड़ता रहूंगा। देश की सबसे बड़ी ताकत किसान, गरीब, मजदूर, एसटी, ओबीसी, युवा के अधिकार की आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय आपका सदन के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अंत में
इतना ही आपसे कहना चाहते हैं इस सदन में कि अपना क्या है गैर क्या, इसका जुनून छोड़िए, दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए, दर्द से रिश्ता जोड़िए। और इसी के साथ माननीय सभापति महोदय कहना चाहता हूँ थैंक यू उमंगों की नदी बढ़ती किसी दिन सूख जाती है, कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है, कहो इन हुक्मरानों से कि भूले नहीं सच को, तिलक के अक्षतों में भी लिखा वनवास होता है, लिखा वनवास होता है। माननीय सभापति महोदय आपने समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा एक सुझाव है, इमरान प्रतापगढ़ी के शेरों को बोलने से पहले 3 बार पढ़ लें। इन्होंने शुरुआत मेरे आने से पहले खड़गे जी के माध्यम से करा दी कि मौसम कैसा आएगा, कितना सताएगा। टेक केयर। इमरान प्रतापगढ़ी तो नहीं रुकेंगे, पर उनके शेर को पढ़ते टाइम 2 बार देखें। एल हनुमंथिया जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको भी जरूर कोई शेर दिया होगा उन्होंने। सर मैं पोइट्स के खिलाफ नहीं हूं सर डोंट वरी सर, आई विल नॉट। सर थैंक यू चेयरमैन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ब्रीफली। यस सर आई एम ग्रेटफुल to my party Indian National Congress and my leaders Srimati Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji. One second. When you said I am grateful, I was about to say thank you. Fine sir. And our neta in the house Sri Mallikarjun Kharge ji, the then General Secretary of Karnataka in charge Sri Venugopal ji, and now Mr. Surjewala ji, my Karnataka leaders, now the present Chief Minister Sri Siddaramaiah ji, then President Dr. Parameshwar ji, and D.K. Shivkumar ji. They are all reasons for me to be here today and for the last 6 years. Sir, with pride, I am expressing my views here. I have given my best to this house to my ability. And I have learnt a lot of things by this house for me and with all my experience. Sir, in spite of ideological differences here, we have very good human beings across the party line. They have always appreciated the good work done by any member. And I am one who enjoys that love by many members of this house. Sir, I must remember Sri Venkaiah Naidu ji, who was our earlier chairman of this house, who used to comment whenever you speak on any subject. And he used to appreciate or used to correct, as you are doing now. I must compliment Sri Venkaiah Naidu ji for his encouragement on many issues which I have expressed in this house. Sir, many issues raised in this house. I was thinking this house will definitely be the voice of the unreached in this house. It will solve the problem, or it will take care of the issues, because that is the apex body of the country. Sir, I am seriously disappointed on many issues which was raised in this house, which were very serious, which includes crores of people, have not been touched upon by the ruling governments. That is what I am seriously worried, that I still request the house, whatever issues raised in this house has to be addressed with utmost priority and sincerity. That is my request, sir. Thank you. So, thank you very much, sir, for this opportunity, and I am thankful to you and all the people here. Thank you so much, sir. हनुमंतिया जी, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहा, my leader in the house,
Yes. I think he is your leader everywhere. Yes, Am I exactly, right? sir. Thank you. I stand corrected, sir. Thank you. Dr. Anil Jain. अनिल जी, धन्यवाद सभापति महोदय। सुनिए, सर्जिकल ऑपरेशन कीजिए क्विकली। राइट सर। मैं सर्वप्रथम अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, निवर्तमान अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस महान सदन में पहुंचाने का काम किया। माननीय सभापति जी, मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूं और जब मैं पढ़ता था तब मेरा मेडिकल कॉलेज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में से एक होता था और मैंने बड़ा गोल्डन पीरियड वहां बिताया है और उत्तर प्रदेश की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन को संघर्ष के माध्यम से पूरा परिवर्तित कराने का काम किया। मैं उसको अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था सदन में आने से पहले तक। और बाकी समय जो 6 वर्ष सदन का है, इस सदन में आने पर हमारे बहुत सारे सपनों को सही माने में हकीकत में बदला गया है। हम लोग धारा 370 की बात करें, हमने धारा 370 हटते देखा है, कश्मीर का पूर्ण विलय होते देखा है, 35A को हटते देखा है, हमने ट्रिपल तलाक को जाते देखा है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनते देखा है और जो बहनों को अधिकार मिले उसका आगाज देखा है। हमने CAA को यहाँ पास होते देखा है, हमने नारी बंधन अधिनियम को पास होते देखा है, हमने 150 साल पुराने कानूनों को दफा होते देखा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। मुझे सौभाग्य है कि मैं होम अफेयर कमेटी का भी मेंबर रहा और इन बिलों पर हमने भी कुछ ना कुछ गिलहरी के माफी की सही कुछ ना कुछ योगदान देने का काम किया है और इस सदन में इसको पास किया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, गर्व है कि हम गुलामी के जो भी अवशेष बचे हैं उनको धीरे धीरे मिटाते जा रहे हैं। हमने इस कार्यकाल में भव्य राम मंदिर देखा है। लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मुझे सौभाग्य है कि मैं राम मंदिर से 14 अक्टूबर 1984 से जुड़ा हूं। मैं तब जब लखनऊ में राम जानकी यात्रा आ रही थी उसका मुझे संयोजक बनाया था 1984 में। तब से मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हूं। 90 में भी वहां था और 92 में भी जब ढांचा गिरा तो मैं वहीं था और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला और उस सौभाग्य को पूरा होते देखा है, सब स्वप्न को पूरा होते देखा है। मान्यवर, मैंने यहाँ राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलते देखा है। मैंने यहाँ भारत मंडपम बनते देखा है। भारत मंडपम लोग सोचते थे ऐसे मंडप बनेंगे तो किसके नाम पर रखे जाएंगे, लेकिन ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के गुरुत्तर दायित्व के लिए को ध्यान में रखते हुए भारत मंडपम रखा, यशोभूमि बनते देखा है। मान्यवर, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के, गरीबों के सपनों को पूरा होते देखा है। इस देश में इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, 2014 के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आए हैं। 1-2 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आए, बल्कि करोड़ों करोड़ों जीवन के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। चाहे जनधन की बात करें, चाहे शौचालय की बात करें, चाहे LPG की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, फसल बीमा की बात करें, चाहे स्वनिधि की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। ऐसे कार्यकाल को थैंक यू थैंक यू। विपक्ष के वरिष्ठ साथियों का भी हमको मार्गदर्शन मिला है, उनसे भी सीखने को मौका मिला है, पक्ष के सदस्यों को शिक्षण का मौका मिला है और मैं ऐसे जीवन के आगे के क्षेत्र में जो सीख मिली है उसको हम ले जाएं और आगे बढ़ाते रहें। ऐसी आप सबकी शुभेच्छा और आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। राकेश जी, ब्रीफली। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के लिए एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। मैं राजनीतिक शास्त्र 2 दशक से अधिक पढ़ाया। मुझे लगता है ये शब्द राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा लिविंग यूनिवर्सिटी। वास्तव में संसदीय जनतंत्र में
जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिविंग यूनिवर्सिटी कहा है, यह एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जो संसद और संसद के बाहर लोग प्रशिक्षित होकर एक ऐसे परिवर्तन करते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता खोलती है। इस सदन में जब मैं आया 2018 में, मैं इसको एक भारत के लिए परिवर्तन का युग मानता हूं, क्योंकि एक नेहरू युग के बाद जिस युग को हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने अनुभव किया, जो मोदी युग शुरू हुआ है, यह सिर्फ दो व्यक्ति का नाम नहीं है। दो अलग प्रकार की विचारधाराएं, भारत को देखने का दो अलग नजरिया, भारत के भविष्य को बनाने का दो अलग प्रकार का कार्यक्रम और नीतियां। हम सब जो इस सदन में रहे हैं भाग्यशाली हैं। जिस जम्मू कश्मीर के बारे में हम आज़ादी के बाद से लड़ते रहे, नारा लगाते रहे, जूझते रहे, उस जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से 370 समाप्त होते हुए हमने देखा। जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा होते हुए, जो अभिन्न हिस्सा नहीं था, उसे अभिन्न हिस्सा होने के हम गवाह बने। जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने देखा, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ और 500 साल के संघर्ष को विराम मिला और ये सदन उसका गवाह बना। मैं 3 छोटी बातों को कह के अपने रेखांकित करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, संसदीय जनतंत्र डिबेट और डिस्कोर्स पर आधारित होता है। भगवान बुद्ध ने वज्जी संदेश में कहा था कि जो गणतंत्र निरंतर विमर्श करता है, जहां सदन निरंतर कार्य करता है, वो उस गणतंत्र का कभी प्रभाव नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की भी खुशी है, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात का ऐलान किया, व्हाइट हाउस में, बीबीसी के साइट पर, यूरोपियन काउंसिल में जो शब्द लिखा हुआ है, द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी इज ग्रीस, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को यह बताया, हम सब साक्षी बने कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र का सबसे पुराना घर है, लोकतंत्र की जननी है। इसलिए मैं कहा ये युग परिवर्तन के हम साक्षी बने। जिन लोगों को भी इस दौर में सदन में रहने का मौका मिला, वो इतिहास बनते हुए देखे, नए युग का निर्माण होते हुए देखे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि मुझे राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया जा रहा है, उस वक्त, उस क्षण मैं अपनी माँ की अर्थी के साथ था, उनकी अंतिम क्रिया के लिए जा रहा था। इसलिए उस क्षण को मैं भूल नहीं पाया। मैं पार्टी के नेतृत्व, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अवसर दिया। इस सदन में के इस रिफॉर्म में सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जब सदन की लंबी प्रक्रिया चलती है उसमें कई प्रकार की इल्स यानी कई प्रकार की न्यूनताएं आती हैं। पिछले 2-3 सालों से और खास करके इस अवसर पर जो आपने सदन को रिचुअल से हटाकर वास्तविकता, हकीकत पर, यथार्थ पर लाने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि दुनिया के संसदीय जनतंत्र में जो अभी सुधार की प्रक्रिया चल रही है वह एक आईने की तरह होगा कि सदन, थैंक यू, और भगवान बुद्ध का वो संदेश जो है, सदन डिबेट डिस्कस होता है, तर्क की ताकत की जगह होती है, ताकत के तर्क की जगह नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जीवीएल नरसिम्हा राव। Thank you, Chairman sir. First of all, I'd like to express my gratitude and heartfelt thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the then National President and Home Minister Amit Shah ji, present President Nadda ji, for having given me the opportunity to serve as a member of this very august house. So, sir, though I hail from the state of Andhra Pradesh, I was elected from Uttar Pradesh by the party leadership to give representation to the state of Andhra Pradesh and to give voice to the people of Andhra Pradesh in the 2 houses of parliament. Sir, inspirational leadership and life of
Prime Minister Modi ji has inspired my transformation from being a cephalogist, columnist, author, and a researcher into a person committed to public welfare and public good rather than individual growth. Sir, in this House, I have used every instrument available, be it 0 hour, special mention, and every other opportunity to highlight public concerns and problems of Visakhapatnam and the state of Andhra Pradesh. And my efforts have helped me to really provide some kind of service to millions of people. During COVID, sir, I was able to help thousands of people who were stranded in different parts of the world. In Varanasi, I was instrumental in getting a train sanctioned from Varanasi to Visakhapatnam, which was pending for 30 years. I have helped for the recognition and empowerment of backward classes in Uttarandhra region, to give them reservation in the central OBC list. So like this, I think this opportunity was, I think, had greatly availed for public welfare. And I would like to also place on record my sincere appreciation, my sincere gratitude to you, sir, as the chairman, the former chairman, Venkaiah ji, to the vice chairman, Harvansh ji, and many others. And I will use this experience and knowledge gained as a member of Rajya Sabha, and I'm sure this will continue to inspire me to work for public good and public welfare after retirement from this House. Thank you very much, sir. Shri Samir Urao. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने ऐसे क्षण पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, मैं झारखंड के एक आदिवासी गांव में जन्म लेने के पश्चात मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन इस देश के उच्च सदन का हिस्सा बनूंगा, और मैं राज्यसभा का हिस्सा बनने का कल्पना भी कभी नहीं कर सकता था। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और माननीय अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी को, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का, जिन्होंने मुझ जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव से उठाकर उच्च सदन का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। इस सदन के अंदर में माननीय वेंकैया जी हैं, माननीय अनंत कुमार जी थे, अरुण जेटली जी थे, थवरचंद गहलोत जी थे। इन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और आपका भी स्नेह, संरक्षण और मार्गदर्शन मिला है। उपसभापति माननीय हरिवंश जी का भी स्नेह, संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, और अभी हमारे माननीय सदन के नेता आदरणीय पीयूष गोयल जी का भी मार्गदर्शन मिलते रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, कि इन लोगों के मार्गदर्शन के पश्चात हमें संसदीय कार्य को सीखने का, समझने का अवसर हुआ, और मैं इस सदन के अंदर बहुत सारे चीज़ों को सीखा। महोदय, किसी कालखंड में हम राम मंदिर, धारा 370 आदि जैसे, बस एक मिनट, ऐसे कई विषयों के बारे में चर्चा सुनता था। महोदय, मुझे गर्व है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार तथा संसद के स्वर्णिम काल में इस सदन का हिस्सा बन पाया। यह स्पष्ट रूप से संसद के इतिहास का स्वर्णिम काल है। मैं अपने कार्यकाल में धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण, महिलाओं के अधिकारों के लिए मातृशक्ति वंदन विधेयक सहित पुराने कानून को हटाकर अनेकों ऐतिहासिक अवसरों को स्मृति के रूप में मैं इस सदन से लेकर के जा रहा हूं। महोदय, अंतिम लाइन, सभापति महोदय, मैं आपको एवं सदन के अपने सभी साथियों को मेरे कार्यकाल के दौरान किए गए सहयोग के लिए हृदय से नमन करता हूं और सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। श्री अहमद अशफाक करीम। सभापति महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका इनायत किया। आज मैं समझता हूं कि न दुख का दिन है हमारे लिए, न सुख का दिन है।
जाहिर है जिसे नौकरी मिलती है वही रिटायर करता है और फिर रीअपॉइंटमेंट भी होता है, और अगर प्रोफेसर होता है तो और भी ऊपर कहीं न कहीं एमेरिटस हो जाता है। तो कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और यहाँ सदन में जितने लोग हैं सभी खुशनसीब हैं और सभी का सौभाग्य है कि सदन में हैं। उसमें मैं भी एक अपने को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि सदन में जितने लोग हैं उनके साथ मैं भी हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान लोगों के साथ मुझे इस सदन में बैठने का मौका मिला, आपके साथ बैठने का मौका मिला, डिप्टी चेयरमैन साहब के साथ बैठने का मौका मिला, वैंकैया जी जो पहले हमारे चेयरमैन हुआ करते थे उनके साथ बात करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखने का मिला, बहुत कुछ अनुभव हुआ, बहुत कुछ हमने सीखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय कब होगा? जब आर्थिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय होगा ऑटोमेटिकली सामाजिक न्याय हो जाएगा। इसलिए आर्थिक न्याय करने की ज़रूरत है। और अभी 2 मिनट नहीं हुआ है सर, घड़ी अभी वक्त बाकी है। बहरहाल हमें आज ज़रूर ये कहना चाहिए कि हम सब लोग बराबर हैं। ये महज इत्तेफाक है कि हम लोग इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, कभी आप इधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कहीं पर भी मुझे इसका दुख, इसका गम नहीं है कि अपोजिशन में हैं, बल्कि सुख हैं। उस दिन को याद करते हैं जब पंडित नेहरू जी जानबूझकर कहते थे कि जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा हम सही सरकार नहीं चला पाएंगे। काश वह परंपरा हमेशा हमेशा रहती। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बिनोय विश्वम, 2 minutes. Sir, thank you. Sir, this house of the elders is an integral part of the parliament. We all looked at it with great respect, great trust and hope, because this is the temple of democracy. With this hope I came, and with this trust I am going back, sir, in July. Sir, I was representing a party. Sometimes I was only one of the two in the party, in the house. Many a time I was alone here, but I could say I raised to issue the voice of the common people, the workers, the peasants, the downtrodden, and the voiceless. And my understanding is that even though they opposed me politically, many of them took this in light spirit. They fed with me. Sometimes they have laughed at me. Many a time they raised their voice against me, but I remember they are all friendly to me. To me, that is the beauty of democracy. And the chair was always maybe you or Venkayaji. Sometimes I felt that the chair was always cruel to us, the small parties. I believe that the small parties, they represent an ideology, a politics, a cause. So they should be given ample time to express their views. Thank you. The moment we begin to start. Thank you, sir. You will get another opportunity before you retire. You will get another opportunity before you retire. Thank you. Thank you. Priyanka Chaturvedi. Okay. Just 2 minutes. No, you'll get the opportunity. Less than 2 minutes because I do understand that only 2 minutes. So on behalf of my party, I'd like to extend my best wishes to all the retiring MPs as they leave from this house, and maybe some of them would be returning back. My own colleague who sits next to me would also be retiring. So it's yes, sir, 30 seconds. Sir, just 2 things I'd like to say. One thing, because we are short of time. So there is a quote which I read and I live by: when you think you are at the end of something, it is the beginning of something else. In that something else, I would just request all the retiring MPs that as they leave with a lot of knowledge, with a lot of learnings, they impart some time to train, groom young leadership so that they, when they come here, they understand how legislative processes work and will bring immense talent and immense knowledge to all the legislative work they participate in. Thank you so much and extend my best wishes once again. So you are seeking grooming for yourself also? So I will also be grooming, sir. I'm already grooming. Fozia Khan.
Sir, on behalf of my party, I am wishing all the 68 retiring members from the depth of my heart for another beginning in life, sir. Along with them, sir, Dr. Manmohan Singh ji, Honorable former Prime Minister, who is known for abolishing the license Raj to speed up the slow economic growth and corruption in the Indian economy for decades. So yesterday our Honorable Prime Minister quoted him in his reply to the President's motion of thanks. Although he gave a negative connotation to this quote, I feel it actually speaks more about his virtues of honesty and integrity, sir. He did not lie, he did not mislead or resort to propaganda. It was only honest introspection. Honest introspection, sir, is virtue, while self-praise and arrogance is not. Along with them, Jaya Bachchan ji, friendly, encouraging, committed, highly experienced, and forever ready to stand against injustice, sir. Sir, Vandana ji, she has been a mayor, MLC, she has been twice a Rajya Sabha member, and she has performed in an outstanding way in all her roles, sir. Sir, the other women members who are retiring are Dr. Ami Yagnik, Sonal Mansingh ji, Saroj Pandey ji, Kanta Kardam ji. All these women have proved what is women power, sir. Sir, I will only say one thing, that in the words of William Wordsworth, he spoke about daffodils, that for oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. So, sir, these retiring members will be the bliss of solitude when we are in solitude, sir. Thank you. Honorable Leader of the House. Honorable Leader of the House. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बड़ा ही मिला जुला भाव होता है आज के दिन। एक तरफ बहुत अच्छी यादें रहती हैं, कई माननीय सदस्य सांसदों ने अपनी अपनी यादें उजागर की। थोड़ा बहुत दुख भी होता है जब टर्म खत्म हो रहा होता है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी मित्रों की भी भावनाएं सुन के आनंद आता है कि अच्छे पल जो हम सब ने मिल के मिलाए हैं, उनकी यादें उजागर होती हैं। तो एक प्रकार से एक भावुक क्षण है, और इस नॉस्टैल्जिया के बीच में कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ तीखी बातें भी होती हैं। एक तरफ हमारे मित्र अनिल जी बताते हैं कि 5-5 हमारे माननीय संसद सदस्य जिनका नाम अनिल है, वो एक साथ रिटायर हो रहे हैं। पर इतना हमें संतुष्टि है कि एक अनिल बोंडे, डॉक्टर अनिल बोंडे अभी भी रहने वाले हैं हमारे साथ। एक तरफ हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वो हर बार बड़प्पन से हमारे वरिष्ठ नेताओं की गुणगान गाते हैं, उनकी योगदान की तारीफ करते हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने जो कहा, और दिल से कहा, कोई उसमें पढ़ा लिखा भाषण या ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। वैसे माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी मनमोहन सिंह जी के लिए कुछ पढ़ा अपने वक्तव्य में। मैं समझता था कि इतने वर्ष साथ में काम किया है तो वो भी अपनी दिल की भावना बताते डॉक्टर सिंह के लिए। परंतु एक तरफ हम सबकी जो भावनाएं हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ साथी हम मिस करेंगे, उनका योगदान, जिस प्रकार से उन्होंने इस उच्च सदन की गरिमा बढ़ाई, बड़े बड़े कानून पारित हुए, इस भव्य नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग में जिस प्रकार से शुरुआती नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हुई, एक प्रकार से एक ट्रेंड सेट हुआ कि आगे आने वाले दिनों में ये नया भवन आगे आने वाली पीढ़ी को, अमृत पीढ़ी को, आगे आने वाले अमृत काल में जब भारत विकसित भारत की तरफ तेज गति से प्रगति कर रहा है, कैसे इस सदन का व्यवहार रहेगा, चाल चलन रहेगा, योगदान रहेगा, और कैसे हम सबको कर्तव्य भावना से भारत के भविष्य के लिए अपनी अपनी कर्तव्य को निभाना है और अपना अपना योगदान देना है। वैसे अभी अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए और इस परंपरा को कायम रखनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ
कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की नहीं हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष की रहेगी कि उनको मजबूती से अपने नंबर भी, संख्या भी बढ़ानी है, उस प्रकार का काम करके जनता का दिल जीतना है। और मैं समझता हूँ भारत की विकास यात्रा में व्यवधान डाल के या भारत के विकास पर ईर्ष्या करके विपक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। विपक्ष को अपने कर्तृत्व से, अपने काम से लोगों के बीच जाके उनका दिल जीतना पड़ेगा। हमारी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अवश्य हम चाहेंगे कि इस सदन में अच्छा डिबेट हो, डिस्कशन हो, और हर एक विषय, हर एक व्यक्ति अपने अपने उसमें जोड़ सके, योगदान दे सके, उसमें अपना अपना विचार विमर्श करके अच्छी निर्णय लेने का अगर हम सब सामूहिक रूप से फैसला कर लें कि सदन अच्छी तरीके से चले, कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, तो मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई से देश को भी लाभ होगा, देश की विकास यात्रा को भी लाभ होगा। माननीय अरुण जेटली जी, जो पूर्व में नेता सदन रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था, वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस हाउस इज दैट वी हैव लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। मैं समझता हूँ इस भावना से अगर हम सब आगे भी चलते हैं तो आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाने में सभी व्यक्तियों का एक अहम भूमिका रहेगी। कई मान्य सांसद वापस आएंगे, कई नए सांसद आएंगे, नए विचार लेके आएंगे, नए अनुभव लेके आएंगे। हर एक का अनुभव हो, उनकी आवाज हो, वो इस सदन को शोभा देगी। आगे चल के जिस प्रकार से हमारी टीम ने, इसी ग्रुप ने जो आज रिटायर हो रहा है, इसी ने आर्टिकल 370 और 35A को रद्द करने का निर्णय लिया। इसी टीम ने जो भारतीय न्याय संहिता का निर्णय लिया, बड़े बड़े फैसले लिए गए। और हम सबके कार्यकाल में ही राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो हम सब तो सौभाग्यशाली हैं। हम सब इस टर्म के जो माननीय सांसद हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी चल के, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स में कहा कि उनकी तीसरी टर्म में वो देश और तेजी से प्रगति करेगा, देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, देश कठोर फैसले लेके आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये उच्च सदन, उसमें अपने तरीके से बड़ा योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास कई सारी अच्छी यादें हैं, विजडम की, विट की, ह्यूमर की, अलग अलग नजरिया सामने आया हमारे माननीय सांसदों का डिबेट चर्चा के माध्यम से। दोस्तियां भी बहुत सारी बनी, मित्रता ये मैं समझता हूँ वर्षों वर्षों तक सदैव रहेगी। अलग अलग मान्य सदस्य ने अपनी संवेदनशीलता भी दिखाई, अलग अलग मान्य सदस्य ने अपने कुशलता और अपने बड़े सोच भी इस सदन की अलग अलग डिबेट्स में रखी है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने हम सबको मौका दिया है, जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने सुचारू रूप से ये सदन चले उसके लिए प्रयास किया, रिटायरिंग मेंबर्स की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी और सभी जो हमारे अलग अलग समय पे वाइस चेयरमैन रहे हैं, जो स्टाफ रहा है, उन सबका भी, सभी रिटायरिंग मेंबर्स की तरफ से और हम सब की तरफ से रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा कि आपका योगदान भी अमूल्य रहा है। हम सब आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी चल के संसद की गरिमा भी बनी रहे, संसद की, सदन की महिमा भी बढ़े और स्वस्थ वातावरण में अच्छे खुले मन, खुले दिल के साथ हम सब चर्चा आगे भी चलाते रहें।
जिस प्रकार से आज के फेयरवेल फंक्शन में हमने थोड़ी बहुत नोक-झोंक भी देखी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ यादें उजागर करी। माननीय देवेगौड़ा जी के लिए थोड़ी ईर्ष्या जरूर थी, थोड़ा दुख भी था कि उनका इंडिया अलायंस कमजोर होते जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं हो सकती है, इतनी बात तो स्पष्ट है। और अगर देवेगौड़ा जी को ध्यान में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में और देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए अहम फैसले और बड़ी भूमिका, बड़े दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं और माननीय देवेगौड़ा जी और उनकी पार्टी उसके साथ जुड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने वास्तव में उसमें कोई ईर्ष्या दिखाने का कारण नहीं। और पर्सनल बातें होती रहती है, पर्सनल बातें हम कभी सदन में उजागर नहीं करते हैं, कमरे के बाहर, सदन के बाहर जो बातें होती हैं, और जिस दिन उसका पर्दाफाश सभी करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि किस हालत में बड़े बड़े नेता रहेंगे, वो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ईर्ष्या वर्ड विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ, ठीक। दुख हुआ उनको, मैं ईर्ष्या के मतलब मैं कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को जो दुख हुआ और परेशानी हुई कि देवेगौड़ा जी अब उनके साथ नहीं है। वैसे तो कई उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं, कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तेज गति से साथी उनके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने जवाब में बता दिया कि कैसे अलग अलग समय पे उनके भी बड़े अनुभव रहे हैं माननीय खड़गे जी के साथ। तो ये नोक-झोंक भी इस सदन की एक प्रकार से विशेषता है। ये नोक-झोंक चलती रहे, लेकिन कभी हम डिसिप्लिन ना तोड़े, कभी हम सदन की कार्रवाई में तकलीफ ना डालें, अच्छी तरीके से सदन चले, ऐसा मैं समझता हूं। सभी रिटायरिंग मेंबर्स की भी इच्छा रहेगी कि आगे भी इसी प्रकार से सदन चले, और मैं भी अपनी तरफ से सभी रिटायरिंग मेंबर्स को, सभी आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कुछ तो वापस आ जाएंगे, कुछ अलग अलग तरीके से देश की सेवा में लगेंगे, अपनी पार्टी की सेवा में लगेंगे, अलग अलग अपने पैशन को, अपने हॉबीज को परस्यू करेंगे। उन सभी को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आगे उनके सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको दीर्घायु दे और सफलता सदैव उन सबको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। Papers to be laid on the table, Srimati Meenakshi Lekhi. Very much, sir. Ever grateful. Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business from both departments, Ministry of External Affairs as well as Ministry of Culture. Thank you very much. Well, in the Constitution, I'm the chairman, and when Constitution was amended, Chidambaram ji will recollect, in part 9 and 9 capital A, chairperson word has been used, but corresponding amendment could not be effected. So, chairman at the moment, till the House takes a view, making amendment in that provision also to make it general neutral. Further discussion on the interim Union Budget 2024-25 and the interim budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25. Yesterday, the honorable members had participated in the discussion. Today, the appropriation bills and the finance bills have been included in the agenda, for which a supplementary list of business has been issued. We will now take up the combined discussion on the bills after the Minister has moved the motion for consideration. The Honorable Finance Minister will reply at the end of the combined discussion. Bills for consideration and return. The Appropriation Vote on Account Bill 2024 as passed by Lok Sabha. The Appropriation Bill 2024 as passed by Lok Sabha. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2024 as passed by Lok Sabha. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2024 as passed by Lok Sabha and the Finance Bill 2024 as passed by Lok Sabha to be discussed together.
Srimati Nirmala Sitharaman to move motion for consideration of the following bills. Appropriation, vote on account bill 2024, the appropriation bill 2024, the Jammu and Kashmir appropriation number 2 bill 2024, the Jammu and Kashmir appropriation bill 2024 and the finance bill 2024. So I'll move it one by one, I would suppose. So I rise to move that the bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 24-25 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Motion moved. Motion for consideration of the appropriation vote on account bill 2024. You moved all together? Move to one. Should I move it all separately? Each one by one? I think you can move all together. Sir, I again rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 23-24 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Sir, I also move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 24-25 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Again, I also move that the bill to authorize the payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of financial year 23-24 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. And finally, sir, I move that the bill to continue the existing rates of income tax for the financial year 24-25 and to provide for certain relief to taxpayers and to make amendments in certain enactments as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Thank you. Motions moved. Motion for consideration of the appropriation vote on account bill 2024, the appropriation bill 2024, the Jammu and Kashmir appropriation number 2 bill 2024, the Jammu and Kashmir appropriation bill 2024 and the finance bill 2024 are now open for discussion. Any member desiring to speak may do so, after which the minister will reply. Shri Jawahar Sarkar, not present. Shri Sanjeev Arora. Five minutes. Yes, sir. Chairman, sir, thank you for giving me opportunity to speak on this bill. I am only going to talk on this topic only on one issue, that is health and only health. Every government, sir, since independence, has done whatever they thought was best and required to give health care to the population of the country, especially the downtrodden. My request to the government is that lot more needs to be done, sir. Health expenditure needs to go up vis-a-vis percentage of GDP. Sir, in spite of, I was just trying to get attention of Honorable Finance Minister, she was busy. Because there is no politics involved in it, I am just requesting her for some relief for health sector. In spite of CGHS, medical insurance and Ayushman, out-of-pocket expenses is almost 50%, and these are official numbers in India. And if we take into account unreported expense, like you go to OPD, you go to pharmacy, and it would go up to around 60%. This is a private report which has come out. Madam, sorry, I need to address Chair.
Chairman, sir, through you, another information I would like to bring to the attention of Honorable Finance Minister. India is ranked 176 out of 196 countries world over for high out-of-pocket expense. By whom? Sir, Ranked I'll by give whom? you the report. No. I'll place on the table. No. It is a PRS report, No, sir. indicate to the honorable members right now who has ranked. Pardon? Who has ranked it? This ranking has been granted by whom? Sir, I don't remember what report it is, but I will place on the table the document. I am giving this information from a document, sir. Mr. Arora, we are in the upper house. You are making a statement, trying to generate an ecosystem that we are placed so down in the line. All I'm saying is, would you please indicate... Sir, I have it. Just give me a moment. Which body? It's on my phone, sir. Hold on, sir. Which body has given it? What is its credibility? How can we subscribe to it? Can we allow anyone to calibrate us? Sir, I'll just give me a moment. No, it will not go on record unless you substantiate it. It has to be credible information. We are such a large country on the rise. We have robust economy. Sir, I told you, sir, I am not here to get politics. I am just bringing to the attention of... I cannot permit free fall of information. I have said number of occasions. If you say something by way of fact, I have this report. I'll give it. Come to the next point. I'm sorry, I just... Come to the next point. Yes, I am coming, sir. Thank you. Sir, even Ayushman scheme which has been launched, again, it's a scheme which needs, which is a good scheme. It's for the poor trodden. But the only thing is only 60% in the last 5 years, only 60% of the budget allocated for Ayushman has been used for this purpose. Only there is one reason, that we need to spend more, we need to have more GDP growth so that the government hospitals can give the critical care treatment. So this is the reason I am speaking on a finance bill, that there needs to be more spent out of the GDP on health. Sir, almost 10% of our families annually, again, sir, this I have the report I'll give you from where it came. I appreciate your passion for health. You are doing a good job in your individual right also. But here you will have to be careful. Sir, I will... At least about statistics and figures. Sir, believe me, I know how particular you are about this. I'll place all the reports on the table. Sir, 9 to 10% of the families in India annually are pushed to poverty because of healthcare expense, which again is, sir, a report which I'll place before the honorable chairman in the House. My only request to honorable finance minister is to increase the percentage spent on health for two reasons. First of all, it will help the poor. Secondly, we need to spend a lot on research and development. What happens is, in critical care, when we have to import the medicines which are not available here, what happens is you end up spending so much that you can't afford. If we spend on R&D and we can come up with medicines which are produced here and are affordable, we can save many lives. Thank you. And another thing I have seen, when there is a allocated, the budgetary estimate, usually revised estimate is lower and spent is even lower. So my request is that health ministry be allowed
to juggle with the funds. If in one department they can't spend, they end up spending in another where it is required. Sir, when I gave you 5 minutes, don't give our that party had 2 speakers. Once again, but don't now give only that, I am there. Don't give that suggestion. Shifting from one account to another has to be in accordance with rules. Yeah, no, sir. Within health ministry, I am saying. If that option can be given, because the funds get lapsed. The total time to your party is 9 minutes. Yes, you leave only 2 minutes for Mr. Okay, sir. Shri Randeep Singh. Sir, we do not have second speaker. Let me finish. He is Mr. Mittal is there. He is raising his hand. Sorry, I thought he was not. Yes. I'm sorry. Sometimes it is good to look behind also. Thank you, रणदीप सुरजेवाला जी। शुक्रिया सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया। आदरणीय सभापति महोदय, अंधेरों को चांदनी बताकर बेच रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली सरकार की 2 लाइनों में, दुष्यंत जी मेरे साथी की लाइनों में नहीं, दुष्यंत जी की लाइनों में एक परिभाषा, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं। एक सेकंड, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, कैन यू रियली एग्जामिन वेरी सीरियसली, बिकॉज Imran Pratap Gadi is giving share and shari freely to everyone. Can we tax it? This is the 6th occasion during the day. So if the House agrees and if the spirit of the House is that, why not some more revenue? Come on, continue. Sir, this will not go on record. सारे देश के अगर पोएट्स के पीछे अब ईडी और टैक्स लग जाएगा तो थोड़ा मुश्किल You have diverted. Continue. कमिंग बैक सर। हाँ, continue. सर, एप्रोप्रिएशन बिल हो या बजट, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये मेहनत कशों के लिए नहीं, पेट और पीठ एक करके इस देश के अन्नदाता और खेत मजदूर उनके लिए नहीं, और ऐसा लगता है कि यहाँ ईमानदारी की रोटी कमाने और देश संवारने वाले लोगों के लिए भी कुछ नहीं। कई बार जब इसे ध्यान से देखें आदरणीय सभापति महोदय, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने महात्मा गांधी के भारत से मुंह मोड़ लिया है। मैं अपने रिमार्क्स कोशिश करूंगा कि खेती, किसान, खेत मजदूर, गरीब, जो आपका भी विषय है, आपका फेवरेट विषय है क्योंकि आप भी उसी वर्ग से आते हैं, वहां तक सीमित रखूं। आदरणीय सभापति महोदय, तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते और सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बरेली की रैली में इस देश से यह वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। 15 अप्रैल, आदरणीय सभापति महोदय, 15 अप्रैल 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग, झारखंड, भागलपुर, बिहार में जनसभाओं में फिर कहा कि किसान को भविष्य में लागत पर 50% मुनाफा देंगे, और उसकी परिभाषा भी उन्होंने परिभाषित की। उन्होंने कहा किसान की बीज की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, मेहनत की कीमत, जमीन का किराया, और उस पर 50% मुनाफा देंगे। पर हुआ क्या? इसी सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया, मैं उसकी प्रतिलिपि यहां रख दूंगा, लेकर आया हूं आप चाहेंगे तो, और वहां उन्होंने कहा कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पर निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। द 2 वर्ड्स आई कोट, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो लागत पर 50% मुनाफा देने का किसान को वादा भी 15-15 लाख की तरह जुमला निकल गया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं
जब अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर हो जाए तो सत्ता का सिंहासन डोलता क्यों नहीं? जब एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ये बताती हो कि पिछले 9 साल में 2014 से 2021 तक इस देश में 1,04,74 किसान और खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर हो गए। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट भी लाया हूं सर, ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो सरकार अपने मन के दरवाजे खोल किसान की पीड़ा की बात क्यों नहीं सुनती? और सर, जो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जो 14 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी, उसमें तो क्या लिखा कि 11,290 किसान और खेत मजदूरों ने 2022 में आत्महत्या की। यानी हर एक घंटे में एक किसान और खेत मजदूर हमारे देश में आत्महत्या को मजबूर है। तो ऐसे में सरकार का उस तरफ संज्ञान और ध्यान क्यों नहीं? जब आपकी एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती हो, उसकी भी मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, मैं कहेंगे तो ऑथेंटिकेट करूंगा कि देश के किसान की प्रतिदिन आय मात्र 27 रुपया है और देश के हर किसान पर 27,000 रुपया का कर्ज है। तो देश की सरकार ये कैसे कह सकती है इस सदन में और इसके बाहर कि सरकार के पास किसान की कर्जा मुक्ति का पैसा नहीं? और वो भी तब जब सरकार बैंक डिफॉल्टरों का 19,34,000 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डालती हो और 3,11,000 करोड़ रुपया इरादतन गबन करता है, वो डुबो देते हो। इसको भी ऑथेंटिकेट करेंगे सर, बिल्कुल करूंगा मैं। इसीलिए मैं सर आज लेकर आऊं, मुझे मालूम है कि आदरणीय सभापति महोदय इतने विद्वान हैं कि नहीं तो मुझे कुछ कहने नहीं देंगे। You have invoked my indulgence. Yes. And I am No, sure sir, you I don't place have it to invoke, all on the table of the house. सर, हम सब आपकी इंटेलिजेंस के कायल हैं, इन्वोकेशन की जरूरत नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार हर बजट में ये जवाब दे देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, मैं उन दोनों का बहुत सम्मान करता हूं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो काफी है। आज अगर आप उसकी सच्चाई उनके द्वारा दिए तथ्यों पर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और 4 तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। सर, एग्रीकल्चर सेंसस 2015, उसके बाद तो आया नहीं, जिसकी रिपोर्ट 2018 में आई, उसके मुताबिक देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। पीएम किसान सम्मान में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने और सरकार की तरफ से और लोगों ने कहा कि 11 करोड़ किसान शामिल किए गए। तो यानी पहले दिन ही 14 करोड़ 64 लाख में से 11 करोड़ शामिल हुए, तो 3 करोड़ 64 लाख किसान कहां गए? वो उड़ा दिए गए। चलिए, कोई बात नहीं। साल 2023-24 में आखिरी बार पीएम किसान सम्मान की 15वीं किश्त 14 नवंबर 2023 को चुनाव से 24 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। और वो भी सर मैं कागज लाया हूं, वो पीआईबी का प्रेस रिलीज है, और उसमें कहा गया कि 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपने कहा 11 करोड़ से अधिक, अब ये हो गए 8 करोड़, तो 3 करोड़ 80 लाख किसान कहां गायब हो गए? एग्रीकल्चर सेंसस से 3 करोड़ 64 लाख किसान गायब हो गए। आपने जो आखिरी किश्त दी उससे 3 करोड़ 60 लाख किसान और गायब हो गए। तो इसका मतलब 7 करोड़ 40 लाख या लगभग 7.5 करोड़ किसान सम्मान निधि की परिधि से ही बाहर हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग तथ्य सर, आपने जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने, उसमें आया ये संख्या, लगता है मुझे ये संशय है, और ये संशय आप जब जवाब देंगे तो जरूर दूर करेंगे देश का, कि ये संख्या अब और कम करनी है। 7.5 करोड़ तो उड़ा दिए, अब और कम करने। इसीलिए पीएम किसान निधि का पैसा साल 2020-21 में था 75,000 करोड़। अब पता नहीं क्यों 2024-25 में वो घटकर रह गया 60,000 करोड़। फिर मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट और ध्यान से देखा।
उसमें आदरणीय वित्त मंत्री जी और अधिकारियों ने लिखा है सरकार ने कि ये 60,000 करोड़ अब 12.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। सब आदरणीय सभापति जी, मेरा और आपका हिसाब थोड़ा कमजोर है, वो आदतन कई बार होता है। मेरा तो नहीं है। नहीं है आप अपने आप तो मेरा समय गिन ही रहे हैं सर। मैं यही सर कहलवाना चाहता था, तो इसलिए सर मेरे समय का ख्याल रखिएगा। मैं इट वॉज डायरेक्टेड देयर ओनली। सर 12.5 करोड़ किसान को अगर 60,000 करोड़ रुपया देंगे तो 6,000 रुपया कैसे हुआ? ये तो 4800 रुपए बने। तो वित्त मंत्री जी ने या तो बजट में गलत लिख दिया गलती से, या फिर कहीं ना कहीं तथ्य गलत लिखे गए, या मंशा ये है कि अब 6,000 रुपया से किसान सम्मान निधि को कम करके 4800 करना है और किसानों की संख्या भी कम करनी। और एक ऑप्शन और भी है जी, शायद आपका कैलकुलेशन सही नहीं हो सर। ऐसा है, आप ही ने कहा था अनपढ़ जाट पढ़े लिखे जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। आई एम ओनली कोटिंग। तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आदरणीय सभापति महोदय, एक और बड़ी चौंकाने वाली बात है, और एक किसान के तौर पर, एक किसान के बेटे के तौर पर आपको और मुझे और इस देश के 72 करोड़ के करीब किसानों को जो लगेगी कि खेती का बजट ही काट दिया, और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। सभापति महोदय, साल 2020-21 में कृषि विभाग का कुल बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.41% था। फैक्ट्स कैन बी चेक्ड। 2023-24 में कृषि का बजट कुल देश के बजट का 2.57% रह गया, लगभग आधा हो गया। और जो चौंकाने वाली बात है, पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कृषि विभाग के बजट के लगभग 1 लाख करोड़ खर्च ही नहीं किए, वापस दे दिए। ये कैसी सरकार है? किसान आत्महत्या को मजबूर है, खेत मजदूर आत्महत्या को मजबूर है, हर 1 घंटे में एक किसान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या को मजबूर है, और हम 1 लाख करोड़ वापस लौटा देते हैं। और मैं साल दर साल का आंकड़ा भी लाया हूं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा आपकी अनुमति से। 2018-19 में 21,044 करोड़ खर्च नहीं किया, 19-20 में 34,518 करोड़ खर्च नहीं किया, 20-21 में 23,825 करोड़ खर्च नहीं किया, 21-22 में 429 करोड़ खर्च नहीं किया, और 22-23 में 19,762 करोड़ खर्च नहीं किया। इस देश का किसान कहां जाए, क्या करे, कैसे करे, ये एक प्रश्न है जो इस सदन के सामने अवश्य उठना चाहिए। आदरणीय सभापति महोदय, एक सवाल और उठता है, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम एमएसपी कहते हैं उसकी गारंटी का कानून क्यों नहीं? कोई सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि खेती विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर दस्तखत देते रहें, 700 किसान कुर्बान हो जाएं, खेत मजदूर कुर्बान हो जाएं, तड़प तड़प कर मर जाएं, और जब उनका आंदोलन खत्म हो तो वह आंदोलन इस वादे के साथ खत्म हो कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं शायद रद्दी की टोकरी में छोड़ दिया जाए या वो भूल जाए। क्या हुक्मरानों के जबान की अब कोई कीमत नहीं रही? क्या दिल्ली की सरकार की जबान की कीमत नहीं? क्या उसे मानना नहीं चाहिए? क्या किसान के आंसू पोंछने की कोई मंशा नहीं रही? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में उठता है, जो मैं बड़े विवेक से और संयम से आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, भाजपा सरकार में अब एमएसपी मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर बन गया है इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। क्या यह सच नहीं है कि सरकार एमएसपी पर किसान की फसल खरीदती ही नहीं? और मैं आपको यह बात केवल मुंह जबानी नहीं कह रहा, मैं सरकार के प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा लेकर आया हूं सर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया है। 2022-23 में अगर आप फसल उपज और फसल खरीद का आंकड़ा देखें तो सभापति महोदय, आप और यह सदन चौंक जाएगा। और मैं 4 फसलों का आंकड़ा पढ़कर बताना चाहूंगा। सर, 2022-23 में
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक गेहूं पैदा हुई 1068 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीद हुई 187,92,000 टन, यानी 17.59%। तो बाकी कहां गई? बाकी सब गई बाजार भाव में बिकने के लिए। सर, तिलहन की जो फसलें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, ये इस देश में पैदा हुई 376,96,000 टन, पर सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी गई, आप चौंक जाएंगे, केवल 48,000 टन, यानी 0.13%, 1% भी फसल किसान की एमएसपी पर सरकार द्वारा नहीं खरीदी गई। सर, दालों का आंकड़ा देखिए, 2022-23 में 276,90,000 टन दाल पैदा हुई किसान के द्वारा, पर खरीदी गई कितनी? 1,20,000 टन एमएसपी पर सरकार द्वारा, यानी 0.43%। कहां जाए? क्या बाजारी ताकतों के सामने झोंक देंगे देश के किसान को? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये चार जो बड़ी फसलें, ये पैदा हुई 2022-23 में 491,70,000 टन, पर आपके द्वारा खरीदी गई एमएसपी पर सरकार द्वारा 1,28,000 टन, यानी 0.26%। सर, कहां जाएगा किसान? कैसे जिएगा किसान अगर आप उसे बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ देंगे? और दूसरी तरफ आपने कहा कि अगर बाजारी ताकतों के भरोसे भी छोड़ देंगे, रेट गिर जाएगा, तो हम मार्केट इंटरवेंशन प्राइस मैकेनिज्म लेकर आएंगे। उसको सर ये बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। बड़े प्रचार से ये चलाई कि हाँ, सरकार सारी फसल नहीं खरीद सकती, मैं मानता हूं, पर सरकार क्या 0.43, 0.17% फसल खरीदेगी मेरी? तो इसलिए इन्होंने कहा हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाए। अब उसके बारे में अगर आप देखें तो 2023-24 में 72 करोड़ किसानों के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट इस स्कीम में था। आपका संज्ञान में लाना चाहूंगा, केवल 40 करोड़। फिर मैंने इस साल का बजट देखा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। 2024-25 में अगर किसान की फसल की कीमत गिर जाए तो उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आपने पैसा रखा है 1 लाख रुपया। 72 करोड़ किसानों की फसल के लिए 1 लाख रुपया। आदरणीय सभापति जी, मैं बड़े आदर से आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा और आपके माध्यम से ये कहूंगा कि इसे बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो इस देश का किसान औने पौने दामों पर फसल बेचता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। सर, आदरणीय सभापति जी, पीएम फसल बीमा योजना जिसकी चर्चा यहां की जाती है, वो भी अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मुनाफा योजना बन गई। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं। इस सदन में 23 जुलाई 2022 को सरकार ने जवाब दिया और सरकार के जवाब से यह साबित होता है कि खरीफ 2016 से खरीफ 2022 के बीच बीमा कंपनियों ने जो फसल बीमा योजना चलाती हैं, 40,000 करोड़ मुनाफा कमाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार ने सदन के पटल पर जवाब दिया। सर, प्रीमियम दिया उन्हें 1,59,132 करोड़ और क्लेम किसान को मिला 1,19,314 करोड़। तो ये फसल बीमा योजना जो है, क्या ये प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए मुनाफा कमाई की योजना है? और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के गृह प्रांत गुजरात सहित अधिकतर राज्यों ने पीएम फसल बीमा योजना से कन्नी काट ली। सभापति जी, देश की सच्चाई ये है कि हम एक तरफ हर साल 6,000 रुपया किसान को देने की दुहाई देते हैं, पर किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हर साल टैक्सेस में निकाल लेते हैं। और इसका सबूत है, सभापति जी, आप ये जानते हैं और आपने ट्रैक्टर खुद चलाया है अपने हाथ से, इसलिए मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। किसान का ईंधन क्या है? डीजल। डीजल पर मई 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। लगभग 8 और 9 साल बाद आज एक्साइज ड्यूटी उसी डीजल पर है 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर, यानी 357% अधिक। अगर ये हटा लें
अगर इसे 2014 के रेट पर भी ले आए तो 20 रुपया 15-20 रुपया लीटर तो आज ही डीजल कम हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अकेले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इस सरकार ने 9 साल में 30 लाख करोड़ इस देश के लोगों से कमाए। 30 लाख करोड़ रुपया। जेब हमारी कटी, मजा आपको आया। जेब इस देश के लोगों की कटी, मजा आपको आया। और खेती पर तो आदरणीय सभापति, जेब कटी विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। ठीक, आई विड्रॉ सर। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, अब तो खेती पर गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। पहली बार इस देश में खाद पर 5% जीएसटी, किसान के ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, किसान के खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, किसान के कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों? पहली बार 75 वर्षों में किसान इस टैक्स के दायरे में क्यों? आदरणीय वित्त मंत्री जी, इस पर क्यों दोबारा विचार करने को नहीं मानती? मेरा उनसे विनम्र हाथ जोड़कर यह अनुरोध है। आदरणीय सभापति जी, यही नहीं, किसान की खाद जो फर्टिलाइजर है उसकी कीमतों ने तो किसान की कमर तोड़ दी। डीएपी का बैग 2014 में 1200 रुपए से आज 1350 रुपया थैला हो गया सर, आप जानते हैं। यूरिया कीमत वही, पहले 50 किलो से 5 किलो खाद कम करके 45 किलो का हमारा खाद का कट्टा कर दिया। अब बोलते हैं सल्फर कोटेड करेंगे, अब 5 और कर निकाल लिया। कैसी सरकार है जो किसान के खाद के यूरिया के कट्टे से 10 किलो खाद निकाल ले? वो किसान अपनी आजीविका कैसे करेगा? पोटाश सर, साल 2014 में पोटाश के कट्टे का भाव था 450, आज है 850, 400 रुपए का इजाफा हो गया। सुपर खाद थी सर 2014 में 260 रुपया प्रति बैग, आज वो 340 रुपया प्रति बैग है। इस बजट में तो फर्टिलाइजर सब्सिडी का आपने 25,447 करोड़ रुपया काट लिया। यूरिया पर सब्सिडी काट ली 10,147 करोड़। काश सत्ता पक्ष के मेंबर ये देख पाते, बजट को ध्यान से देखते तो पाते किसान की यूरिया का 10,147 करोड़ कम हो गया। और एनपीके, उसके बगैर तो किसान का गुजारा चल ही नहीं सकता, उसमें उसकी सब्सिडी पर 15,300 करोड़ काट लिया। हमारी सब्सिडी काटी जा रही है, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकाला जा रहा है। किसान को सम्मान निधि पाने वाले 7 करोड़ 47 लाख किसान कम हो गए और आप कहते हैं कि आपने बहुत वाहवाही लूट ली। आदरणीय सभापति जी, बजट में गरीब के साथ और किसान के साथ ये भेदभाव और भावनाओं से खिलवाड़ यहीं खत्म नहीं होता। सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बहुत चर्चा हुई कि देश के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देते हैं। पर वो शायद बताना भूल गए कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, जिसका नाम बदलकर अब आपने पीएम गरीब कल्याण योजना रख दिया, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। सर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है। 3 रुपए प्रति किलो पर चावल और 2 रुपए प्रति किलो पर गेहूं। आज के दिन 75% चावल 25% गेहूं दिया जा रहा है। तो 60 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो चावल 3 रुपया प्रति किलो पर दें तो बनते हैं 800 करोड़, और 20 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं 2 रुपए पे दें तो बनते हैं 200 करोड़। तो कुल छूट कितनी दी? 1100 करोड़। और बवंडर ऐसे उठा दिया जैसे देश बदल दिया हो। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही गरीब कल्याण योजना है। 1100 करोड़ की छूट देते हैं, 30 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल के टैक्स से निकाल लेते हैं और खूब बेंच थपथपाकर वाहवाही कमाते हैं। किस प्रकार का देश है? हम कहां पहुंच गए? सर, इसे कहते हैं गरीब के अधिकार छीनकर मार्केटिंग करना। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग
by PM गरीब कल्याण योजना। और सर, खाद्य सुरक्षा की सब्सिडी अगर इस साल के बजट में देखें तो आदरणीय वित्त मंत्री जी और सरकार ने खाद्य सुरक्षा की सब्सिडी का भी 7,082 करोड़ काट लिया। क्यों? गरीब के साथ ये अन्याय क्यों? सवाल सीधा है। सर, सरकार SC BC कल्याण की बात तो बहुत करती, पर असली बात उसके उल्ट है। साल 2023-24 में SC समाज की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट आपने दिया 6,359 करोड़, पर वो पैसा ही नहीं दिया 5,400 करोड़, 959 करोड़ काट दिए उनके गरीबों के। ये SC समाज के वेलफेयर की बात है। PM अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, 2050 करोड़ के बजट की 23-24 में आपने घोषणा की, दिया कितना? 450 करोड़, 1600 करोड़ ही उन गरीबों का काट दिया। फ्री कोचिंग फॉर SC BC विद्यार्थियों के लिए 2023-24 में कहा 47 करोड़ देंगे, दिया कितना रिवाइज्ड बजट में? 14 करोड़ 82 लाख, 32 करोड़ उनका काट दिया। OBC और EBC के लिए श्रेयास योजना लेकर आए, 2023-24 में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बजट में घोषणा की 150 करोड़, दिया कितना? 80 करोड़, 70 करोड़ उनका भी काट डाला। DNT ट्राइब्स के उत्थान की स्कीम में 2023-24 के बजट में आपने घोषणा की 40 करोड़, दिया कितना? 15 करोड़, 25 करोड़ उसका भी काट दिया। मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए 23-24 और 24-25 में एक फूटी कौड़ी आपने नहीं दी। उल्टा आपने कहा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम नमस्ते लेकर आएंगे। 23-24 में बजट में घोषणा कर दी 98 करोड़, दिया कितना? रिवाइज्ड एस्टीमेट से पता चला 30 करोड़, 68 करोड़ उनके भी काट दिए। और अब तो सर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का बजट भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 करोड़ काट दिया। क्या ये आपका SC और BC के साथ न्याय है? इस बात का फैसला भी करना पड़ेगा। और सर, मैं 4 लाइन कह के मेरी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। और ये मेरे साथी ने, इसने नहीं, कभी कभी हमारे जैसे किसान भी 4 लाइन लिख लेते हैं। घोर अंधियारे की स्याही में अब सूरज का आगाज नजर नहीं आता, तेरा अहंकारी आकार तो नजर आता है, तेरा इंसानी किरदार नजर नहीं आता। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है। भूखे पेट खाली जेब महंगी जिंदगी अब तेरी पहचान है। बेरोजगार जवानी के टूटते अरमानों का सबब तेरे नाम है। खाली सिलेंडर वाली गरीब मां की आह न लग जाए तुमको, खाली सिलेंडर वाली गरीब मां की आह न लग जाए तुमको, हाथों में छाले लिए मजदूर की बद्दुआ न लग जाए तुमको। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल गांव लौटते आदमी के मन की चित्कार सुनी है तुमने? क्या अपने बच्चों की हजारों लाशों से अटी गंगा मैया की पुकार सुनी है तुमने? सर 30 सेकेंड, आई एम कंक्लूडिंग। नो प्लीज। क्या कभी सुनी है सर? 30 सेकेंड ओनली। क्या कभी सुनी है घर में आटे के खाली डिब्बे की खनखनाहट? क्या सुनी है महंगी रोटी और सस्ती जिंदगी की चिल्लाहट? उठो, अहंकार की अट्टालिकाओं से बाहर तो आओ, सिसकती जिंदगी के दर्द को जान तो जाओ। अगर जान लोगे, महसूस करोगे तो पाओगे कि तुम्हें कराते हुए हिंदुस्तान की आवाज सुना। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। रणदीप सुरजेवाला जी, आपने कई बार यह कहा कि आप तो जानते ही हैं, मुझे कहा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतना कहूंगा, गांव में ज्यादा जाया करो, ज्यादा जानकारी लीजिए। निकलेंगे न तो आपको पता लगेगा कि गांव के बच्चे कहाँ हैं, कहाँ जिलाधीश हैं, कहाँ SP हैं, क्या क्या है। नहीं, अरे सुनिए, मेरे को कहा ना, नहीं, मेरे को कहा आपने कि आप जानते हैं। मेरा सुझाव है, आप मेरे गृह प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, कभी जाइए किसी गांव में, जाइए। डॉक्टर अमर पटनायक, मुझे नहीं कहते तो मैं नहीं बोलता। आपने कई बार कहा एंडोर्समेंट के लिए कि आप तो जानते हैं, कभी जाइए, मेरी बात मानिए, जाइए कभी। थैंक यू चेयरमैन सर। आपको असलियत का पता लगेगा, आंकड़ों में फंस गया आप।
Thank you, Chairman, sir. Sir, 8 minutes only. So as the name suggests, so it is only an interim budget with the full budget slated to be presented in July 2024. Therefore, instead of getting into the granular details of budgetary allocations for various sectors, which many speakers have spoken about, I would like to offer a few suggestions for government to consider while presenting the full budget in July 2024. Before doing that, I would like to compliment the government and the Finance Minister for exercising fiscal prudence and not being drawn into populist pressures in view of the impending Lok Sabha elections, but maintaining continuity in the broad policy trajectory of the last 4 years of an investment-driven, digitally anchored, and innovation-nurturing economic growth model, thereby reaffirming macroeconomic stability and boosting the confidence of citizens, rating agencies, and businesses in the country as well as abroad. So, increase in capital expenditure by 11%, a research fund of rupees 1 lakh crore, the new urban housing scheme for the middle class, withdrawal of petty direct tax demands, making PMJY more inclusive by including ASHA and Anganwadi workers and helpers, free vaccination against cervical cancer are all steps in the right direction. So I'll correct it, it is only promoting vaccination, not a free vaccination. I would also like to really appreciate the outcome and not outlay-centric welfare saturation model followed by the government. This is something which the Finance Minister mentioned in the budget. So now I'll start with the economy, my suggestions. So while debt financing is common for a growing economy, India's current public debt to GDP ratio stands at a high of 81%, of which approximately 57% belongs to the central government and the balance to the states. Even though fiscal deficits have been kept under a tight leash following a glide path, a recent IMF report raised concerns about long-term sustainability of India's debts. I'm happy that the interim budget has recognized this and has estimated less borrowings in 2024-25 compared to 23-24 from 15.5 lakh crores to 14.13 lakh crores. However, can we do something more? The government has met its disinvestment targets only twice during the last 10 years, in 2017-18 and in 2018-19. We have to review our strategy on this front and not completely abandon it if value can be added or unlocked in certain identified CPSEs by this route. This could reduce the deficit burden. So since 2021, Odisha has been presenting a status paper on public debt and a fiscal risk statement along with the budget every year. This practice could probably be followed here. I think a separate committee should be set up to engage with this issue in greater detail, and if structural changes are warranted in current practice of RBI as being responsible for debt management of the central government, then the same could be followed. So India's overall tax to GDP ratio is around 18%, center it is about 11.6%. There is therefore a need to hasten pending GST reforms of upgrading the GST network to prevent fake supplies and fraudulent claims of input tax credit, explore the possibility of taxing new emerging technology-backed digital platforms that host online games, private virtual digital assets by way of government regulation, and similar such initiatives, and exploring the possibility of non-tax revenue from user charges on various UPI applications, securities, and capital market transactions. So the second point is on subsidy administration. So there is an urgent need for a revision in the policy pertaining to two of the highest subsidy costs for the exchequer, which is the fertilizer subsidy and the food subsidy. So though India leads globally in average in several crops, our productivity is low compared to global average in these crops and has in fact been declining continuously despite increasing use of chemical fertilizers and a fatter subsidy bill as a consequence. Imbalanced use of nutrients, deficiency of micro and secondary nutrients, and depletion of soil organic carbon due to overuse of fertilizers are some of the prime reasons for reducing yield. A possible solution to this can be setting up a cap on a number of subsidized bags of fertilizer per farmer, as has been done for subsidized LPG cylinders, bringing urea under the NBS regime, and many other efforts. I also recommend
that the Department of Fertilizer and not the Department of Agriculture be allocated separate funds for promotion of nano fertilizers and organic fertilizers so as to reorient their basic vision and objective towards natural farming and not work at cross purposes with the Ministry of Agriculture by promoting use of chemical fertilizers. There has to be a long-term plan to phase down use of chemical fertilizers over a fixed period of time. In the immediate term, in order to address the rising import dependency on urea, the GST on raw materials for fertilizers ought to be reduced and incentivize domestic production of the same. With respect to food subsidies, I highly recommend directing them from the mainstream crops like wheat and paddy to coarse grains like millet, which would reduce groundwater usage, improve the soil regime, and empower the tribals too, as millets are largely grown by tribals. This would lead to transfer of subsidies to tribals. A national plan should be prepared for gradual implementation of the above strategy. As far as inflation is concerned, approximately 40% of agricultural produce in India is wasted. So it is an apt time to implement post-harvest, farm gate-to-market, end-to-end integrated cold chain systems and processing facilities, alongside increasing investment in climate-resilient agricultural practices. I am happy that the Finance Minister has recognized this in her budget. As far as employment is concerned, so my suggestion is that, given the gender disparity in the labor market, what could be done is to bring women into the labor force through SHGs and gradually building their capacity to upgrade themselves into micro and small enterprises, a model that Orissa government has started following under the direct leadership and direct guidance of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. We could at least have 5 medium small enterprises in each district within the next 2 years through a concerted intervention which will be women-led. While several steps are being taken to boost manufacturing sector in the PLI scheme, I would strongly suggest that PLI scheme separately for handmade weaving and crafts, where 56% of the labor force are women, could be thought of different from the textile sector. So on financial regulators, my suggestion is that there is a need to develop institutional structures and protocols with a defined point of closure in place, which is publicly notified, so that people who are to inquire about the status of licenses, about removal of imposed restrictions and interpretations can get guidance. This grievance redressal mechanism is currently missing in the regulation sector, particularly in the financial space. This needs to be built. Thank you. Sir, last 1 minute. Sir, there is a need to promote use of regulatory sandboxes to ease the understanding of startups and MSMEs of the regulatory requirements under their compliance. This could also be thought of. So lastly, I would like to thank the Honorable Finance Minister who mentioned that Union government will focus on the states in Eastern India and ensure that they play a pivotal role in growth as engines in, sir, 1 minute, sir, in realizing the vision of Viksit Bharat. So this is my last speech, We have to conclude at 6, sir. So I'll just finish half a second. I would therefore like to reiterate the demand of Honorable CM of Orissa to confer a special focus state on Orissa and transfer at least 60% of the clean energy cess collected on coal extracted from state to state, countering the scourge of natural disasters regularly encountered by Orissa. These are just a few suggestions for kind consideration. Thank you, sir. Thank the chairman for the opportunity to address the House on this interim budget for the fiscal year 2024-25. Sir, in her presentation, the Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, outlined a vision for the prosperous India, harmonizing with nature, modern infrastructure, and leveraging the trinity of demography, democracy, and diversity. The budget, rooted in the 4 pillars, seeks to establish macroeconomic stability, drive capital expenditure for infrastructure, empower the poor youth, men, and farmers, and foster job creation. The government's goal align with Garib, Yuva, Annadata, and Nari Shakti is worth mentioning. Emphasizing the transformative journey of the Indian economy over the past decade, she highlighted the structural reforms for pro-people programs and a renewed sense of purpose.
This Disha Nirdeshak budget aims at Viksit Bharat, an India where opportunities are created for all, supported by the principles of Sabka Prayas. The effort inspires us, but achieving it necessitates recognizing regional realities. I state today representing Andhra Pradesh's unique needs and aspirations. Sir, the railways, in their budget have allocated 9,138 crore for railway projects in Andhra Pradesh is commendable. This reflects a substantial increase compared to the earlier budgets. The commitment demonstrated through a total investment of 68,000 crores underscores the government's dedication to enhancing the rail infrastructure. Our state is experiencing a robust transformation in railway infrastructure marked by the commendable achievement of 97% electrification completion. A rapid pace of laying 246 kilometers of rail tracks annually and also several ROBs and RUBs showcases a focused effort. The establishment of one station, one product stalls, under Amrit Bharat station scheme are commendable initiatives. It is concerning to note that the absence of any mention regarding the operationalization of South Central Railway Zone. Despite the submission of DPR by relevant authorities to establish the zone, the progress has not been made. We want the Government of India to look into it and the Finance Minister to, and the Railway Minister to look into this. I urge the Government to expedite the operation of this zone at the earliest. Also, sir, under the PM Gati Shakti scheme, aim to transform India's infrastructure and logistics sector by streamlining the planning and execution of projects to reduce the logistic costs needs to be focused much. The scheme encountered significant challenges. India's high logistic costs amounting to 13% of GDP have diminished export competitiveness. So this is very important to bring this Gati Shakti project online very urgently. So the low credit takeoff and several other identified problems, have put only 2 out of the 16 identified Gati Shakti cargo terminals only operational in Andhra Pradesh, and data on the estimated employment post-operation of these terminals are also not encouraging. It is very crucial to address these structural issues and macroeconomic stability concerns. I would urge the commissioning of more Gati Shakti cargo terminals in Andhra Pradesh and also to give more focus in the current budget. Thank you. On the income tax, sir, the interim budget maintained existing tax slabs but introduced an income tax remission scheme under Section 87A, aiming to elevate the tax burden for those earning between 5 and 7.5 lakhs. However, rupees 12,500 rupees is inadequate amid rising living costs. There is a need for the government to consider providing more substantial income tax relief for middle class and salaried individuals considering the rising cost of living. This would significantly impact disposable income and spending power of the citizens. Despite Andhra Pradesh government's appeals, a discrepancy in population coverage under NFSA is persisting, sir. It is excluding almost 1.47 crore rice card holders. We urge the central government to re-examine the methodology and include these deserving individuals in the scheme, ensuring food security for all citizens of our state. Thank you, sir. Sir, I think you have given 8 minutes, sir. Just only few other things, final but things. But, sir, you are sharp enough to conclude early. Sir, I'll just put, sir, we want a focus on Central Agriculture University for Andhra Pradesh. Also focus on Polavaram irrigation project. The further funding, certainly need to be looked at, and revised cost estimation should be looked at. Support for aqua industry, as you know, Andhra brings in some of the best potential for this. This investment need to be looked at. Also, spending on health and education also need to be improved. Our state has brought in a lot of investment. We need to put in that. And with that, thank you very much. Thank you, sir. Shri A.D. Singh, 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. I just wanted to bring to the notice of Honorable Finance Minister certain. And then I found that the defense budget is only 1.89
percent of the GDP. Most of the money of this goes to the payment of salaries, pensions, and very little is left for the modernization of the Army, Navy, or Air Force. So, and this percentage is far less than what is being spent in the neighborhood by China, Pakistan, etc. So I would like to request the Honorable Finance Minister that this, instead of, at least we should spend at least 4% of GDP on defense, so that we can quickly modernize our Army, Navy, and Air Force and for the security of the country. See, even the Border Roads Organization, the government is building 1, 2, 3, 5 kilometers of border roads in the Indo-China, and the money allotted to the BRO is only 6,500 crores, which I find is too little. In this kind of situation which is happening, I think I will request the Honorable Finance Minister to make more allocation on that issue. Thank you. You have made two important points already. I don't know. See, I've just seen that in the year 22-23, all of a sudden the investment in the Union Territory of J&K rose to 2,153 crores from 500 crores. So we would like to know where this money is being spent. And another thing regarding the Kisan Samman Nidhi, which is about 6,000 rupees for the farmers, I found this is too less amount for any farmer to get. So I request the Honorable Prime Minister that at least 24,000 rupees per farmer should be given, so that at least they know that they have got some sort of money from the government. Most of the labor laws, 29 labor laws have been amalgamated into 4 labor codes, but they are not implemented because the rules are not there. The scholarship of the minorities, number of students has not increased from 2013-14, so I think the government should have a real look on that. Now coming to the the centre's total liability has more than doubled from 90.84 lakh crores to 183.67 lakh crores between 2018-19 and 2024-25. According to the International Monetary Fund data, the general government debt, i.e. combined domestic and external liability of both the centre and the state, is in excess of 80% of India's GDP. During the UPA regime, the debt to GDP ratio fell to a low of 66.4% in 2010-11. It rose gradually to 66.7% in 13-14 and 70.4% in 2018-19. During the current NDA regime, the debt to GDP ratio rose to 88.5% in 2021 at its peak. So the country is under a heavy debt. Each and every citizen has a huge debt on his head. I think the government has to take a serious look into this. Thank you, Mr. Singh. One last point. See, and so far as there are two small things which I want, in particular areas which are short of suffering from water shortage, like South Bihar and other agriculture areas. Government is not spending any money in reviving the water bodies, which used to be there from time immemorial. Plus, in the case of Health Ministry, though our respected Prime Minister wants Atmanirbharta in the purchase of equipment, but high-tech equipment which is not made in India, so we should allow them to import. Ilamaram Karim. Thank you, sir. 2 minutes. 2 minutes. Only one person, sir. 2 minutes. Yes. Only one person. Actually, I thought 1 minute was good enough for you, knowing your intellect. Our party, sir. Your party has 4 minutes. No, only one person. Only one speaker. Oh, so 4 minutes, sir. Only one speaker. So 4 minutes. 4 minutes. Sir. Earlier, we had already listed Mr. V. Shivdasan also. No, Shivdasan is not speaking. Okay, so 4 minutes. You Sir, get benefit of his absence. Give me some time, sir.
Interim budget presented by Foreign Finance Minister is an attempt to conceal the harsh realities faced by the nation behind a veil of false claims. There is no concrete plan in the budget to overcome the challenges facing by our nation. People have realized that the tall claims made in the budget are simply false statements. Finance Minister claimed that BJP government, which has been ruling the country since past 10 years, has taken India forward. But the reality is just contrary, sir. In the budget, the minister's rhetorical exercise to hide the collapse of the economy, despite claims of a 50% increase in average income and moderate inflation, the ground truth reveals a different narrative characterized by soaring prices of essential goods and widespread unemployment. If the size of the economy is criterion, Pakistan and Bangladesh are better than Finland and New Zealand. But when we look at the Human Development Index, Finland ranks 11th and Pakistan at 161. But according to the parameters of BJP government, it has to be said that Pakistan is better than Finland. That is the difference between the claim. Finance ministers said in the speech they will bring the full budget in the next July. It will remain as a dream in the minds of finance minister. It's never going to be happen. After the Pran Pradishta in Ayodhya, they think that everything is favor for BJP for the next election. Nothing has to be done further, but it will not work out. Sir, in this budget, there is a single mentioning about the workers. 60 crore strong workforce of India never find a place in this budget. They are the real wealth makers, sir. This is pro-corporate budget, and all our public sector undertakings are to be handed over to the corporates. That is the recommendation, that is the proposals in this budget. Finance Minister claims that this is pro-farmers and pro-poor. Sir, in the budget allocation, the allocation for farming sector has drastically reduced. Agricultural sector 22-23 allocation was 4,68,290 crores. 24-25 it is 3,63,944. Sir, total subsidy 22-23 it was 5.7 lakh crores. 24-25 it is 4.09 crores. Food subsidy 22-23 it was 2.72 lakh crores. 24-25 it is 2.05 lakh crores. That is the picture, sir. Thank you. 4 minutes over. So only with Ayodhya they cannot overcome the next election. You said so. Sir, I am concluding, sir. Please. I am concluding, sir. I am concluding, sir. Okay. Thank you. 10 seconds. No, give me time is. Dr. M. Thambidrai. Honorable Chairman, sir. 3 minutes. Thank you very much for giving the opportunity to speak in the interim budget of Jammu and Kashmir and also the General, sir. Sir, each central government, state government, both are taxing nowadays because now budget session going on, state governments are conducting. In Tamil Nadu, sir, today, some of the MPs, when they made dharna, they could not get the money from the central government. But at the same time, if you see the budget of the Tamil Nadu, what they are doing, they are all taxed heavily on the DMK government, house tax, property tax, electricity bill, transport fare, even liquor price. All they increased. The common man suffering in Tamil Nadu, whatever the DMK promised in the election manifesto, they could not fulfill and are sidelining people. For example, flood situation took place. Honorable Finance Minister visited, Home Minister visited. Then DMK MPs met the Home Minister. They are satisfied
they are going to get money. Now, in the media, they are telling central government not allotted. I want to know from the central government whether they allotted any fund for relief or not. They have to clarify because they are telling no single paise again. But it is the bounden duty of the state government of Tamil Nadu. They cannot put the blame on the central government. They have to spend the money. Recently, the Chief Minister of Tamil Nadu visited Spain. He said 3,000 crores of coming the investment. I don't know. Is it a fact? It is government has to clarify that money is to come to Tamil Nadu. And also, sir, you know, whenever Edappadi Palaniswamy was ruling, at that time he gave lot of relief to the farmers. He is a farmer, he is coming as a farmer family, he is a worker, and he knows the problems of the farmers. Edappadi Palaniswamy, like Amma and MGR, like that, he gave lot of relief to the farmers. But the DMK government failed to do all these things and cheated our Tamil Nadu people. Therefore, I want to know from the central government what are the things going on in Tamil Nadu, whether is it a fact that is what they are doing, that I want to know, sir. Thank you. I want, sir, only 1 minute, sir. I want to once again tell the DMK government failed all the election promises and got the vote and cheated Tamil Nadu people. Thank you. Sir, 10 minutes. Sir, please, sir. This is one opportunity we get in a whole year. Sir, thank you very much. But I would like to start by asking the government, our government, the government of people of India, what exactly is the GDP growth now? The impression that we get is that it is at its highest ever in history, that we are about to reach 5 trillion, 3 trillion, and we will be the number one in no time if we get elected. But, sir, that is not a fact. I would like to place on record that the growth of GDP under the UPA's tenure has been over 8%, 8.1%. And the growth of GDP under this government in the last 9 years has been just 5.5% growth. That's not bad, but it's 5.5, and 5.5 is less than 8.1. This year it may reach a very high level of 7.3, but it does not destroy the averages. We need to be clear about statistics instead of misleading the people. So the problem is, there is a feeling that everything began from 2014. And everything began from 2014, and before 2014 was an era of complete darkness. Complete darkness. The previous 6-7 years, nothing was done. Sir, as you know, as mature people, we just cannot go on quibbling these sentences. We have climbed up to the 4th floor, and now we are climbing up to the 5th. But we need to congratulate ourselves for coming up to the 4th floor in the first place before we talk about the 5th floor. Everything, I have mentioned GDP growth, and what is this 67 years thing? What is this 67 years that I keep hearing? 10 years of that 67 years were in the Janta period, respected Sri Atal Bihari Vajpayee's period. So that is 20 years to the NDA government in some form or the other. So we have to get out of this before Modi and after Modi syndrome. Sir, I mentioned fiscal deficit. I mentioned GDP, and I'll touch upon fiscal deficit. This is an extremely worrisome trend. It's not just 5.8%, as we mentioned. Government has improved it from 5.9 to 5.8. Admittedly, it is in terms of absolute money that stays on my taxi meter. I have to pay for it with borrowings. This is a government that lives on debt. It is like saying that somebody is wearing the neighbor's Banarasi sari, or somebody is wearing the neighbor's suit and claiming that dekho mai kitna sundar hu. This is not on because that is not yours, it is somebody else's. You have borrowed it. In 2019, it was heartening to see that the government made a pledge that we will keep fiscal deficit within 3% of GDP. That's a very heartening step because 3% is difficult to keep, but this government made this pledge. Earlier governments have also made pledges, but that pledge has gone for a 6, a complete 6.
Last year, it was 6.4, double of 3.3%. This is accumulated debt, my family debt that I have to carry. Right now, the total debt burden of India stands at 164 lakh crores. Domestic debt, I'm not even including foreign debt. 164 lakh crores, which means that हर हिंदुस्तानी को 1,17,000 रुपया कर्ज वापस देना है. This government has put this burden on the people of India. You can reach a GDP of 5 trillion. We should reach a GDP of 5 trillion, but not at the cost of such heavy borrowing. Sir, you know what is the quantum of borrowing? The quantum of borrowing is exactly the size of the budget 10 years ago. 10 years ago, the size of the budget was this. Problem, sir, is that on taxation, because we are one of the lowest taxed countries, I'm not suggesting that go on increasing tax on the common citizen. The common citizen is already burdened not only with taxation, but with GST. I'm talking of the exemptions given specifically to the corporate classes. My calculation, I submit to the two honorable MOSs here. I wish the FM was there. But two honorable MOSs here, my submission is that 4 lakh crores has been the notional loss. The word notional loss, incidentally, was coined by one of your favorite bureaucrats. Notional loss on account of that exemption. Sir, the honorable MOS, the honorable minister has replied again and again in writing to my questions that 14.5 lakh crores, sir, 14.5 lakh crores, an unimaginable amount, the budget of 5 to 7 states, 14.5 lakh crores has been destroyed, has been written off, and may come back in pinches, in inches, what we may come back in inches, what we lose by miles. 14.5 lakh crores in the first 9 years, we are about to close the 10th, it will be at least 16 lakh crores. This 16 lakh crores is common money. One can say that there is always a loss when you lend money. Of course there is a loss. Businesses means there may be a loss. And the international standard here, what is called the percentage of gross non-performing asset, GNPA, the international standard is 1%. 1%. And there are country after country that do less than 1%. Some countries go up to 1.5%, 1.8%. Maaf kar do, 1.7, man lo. What is our GNPA? What is our NPA? It went up to 11.5%. What I'm trying to hint is that the huge amount of excess GNP is not what the babus and the bankers are telling the honorable ministers, that we need that to clean up our accounts. यार पहले तो बताओ किसने डर्टी के अकाउंट्स, किसके जेब में पैसा गया, किसने लूटा, पहले तो ये सवाल का जवाब दो बिफोर यू से मुझे घर साफ करने दो, मुझे घर साफ करने दो. ये इस पर जो लुटेरा थे, जो लुटेरा है, they are mostly abroad. They are mostly abroad. One Modi, sorry, Nirav Modi, I don't mean Bakki Modi, I mean Nirav Modi. But Nirav Modi is a good example of how you can loot the banks and go abroad. Choksi, Jatin Shah, I don't know how they're all from same place, but together the total loss on account of fraud admitted by the ministry is running at 1.17 lakh crores. 1.17 lakh crores. My state's dues are 1.15 lakh crores. And 1.17 lakh crores has been looted by them. Income tax results show that we common citizens have paid 76% higher in the last 4 years. 76% higher. And the corporates have paid 24% higher in the last four years. Just see the corporate bias of this government. Foreign direct investment, bada dhoom-dhaam ke bolte foreign direct investment has come. Sir, for your kind information, foreign direct investment has fallen from 3.5% of GDP in 2007-8. 3.5% of GDP in 2007-8 to 1% of GDP now. These are hard realities that we need to consider. It's not a question of a blaming game. This country belongs to both of us.
Remittances. We are surviving on remittances of Indian workers and Indian intellectuals abroad. It has reached about 125 billion according to me. It may be higher. The ministers can clarify. Sir, our problem is our tax to GDP ratio is much too small for a good welfare state. A welfare state that looks after health, that looks after education, that looks after everything needs a higher tax to GDP ratio. And that is something that can be easily, honestly administered on those who possess wealth and who appear every now and then in the Forbes magazine as the first richest man, the second richest man. And we can do it in a very legal manner through taxing the securitization. They pledge the market value of their shares for security against bank loan. Usi point per tax karo. There is nothing unequitable about it. I am not much in favor of wealth tax. It's a regressive tax. But you can always tax it at that point. The state are being continuously deprived, and finance commissions have always given between 41 and 42% devolution to the state. इतने बड़े कमीशन बैठाइए कुल मिला के वो 41% या 42% यही बनेगी. In this is becoming a source of fear, a source of terror. What we call fiscal terror has been unleashed on the state. Sir, I am mentioning a person in the House by name, if you say permit, because he has made a statement. You have to give, okay, sir, I won't mention the name. Please. I will mention that an official of the government of Niti Aayog has said in writing, and it is published everywhere, that against 42% devolution to the state in 2014, when this government came to power, he was asked to cut it down by 10%. By 10% by a chief minister turned prime minister. So this is something that we just can't believe. That the same person who fought for the state, the moment he became PM, said, "Das fizdi kam karo, kato state ko itna mat diya karo." Sir, our state is one of those that has been picked up for slaughter, picked up for terrorism, fiscal terrorism. Tamil Nadu is another, Kerala is another, Karnataka is another. Sir, it is a government of cut and cuts. Food subsidy has been cut by 3.3% this year. Fertilizer has been cut by more than 10%, fertilizer subsidy. Total cut this year. Please conclude. Sir, I'm concluding, is from 5.8 lakh crores to 5.8 lakh crores to 4.1 lakh crores. Education has been cut. Sir, health has been cut. Awas has been cut. Narega has been cut. Where are you spending the money? On capital investment. Capital investment for whom? The capitalist class has been able to give only 10% of the GDP, capital formation, and you are spending money on them. On every sector, there has been a cut. Sir, एक बात कहूँ sir, अगर इधर एक सेकंड sir, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं. अहंकार में तीन गए, सत्ता, वैभव और वंश. सत्ता, वैभव और वंश ना माने तो देख लो रावण, कौरव और कंस. Thank you, sir. Sir, जवाहर सरकार जी, you are in confusion about Hindi also. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. Thank you, sir. श्री बिनोय विषम. Sir. Sir. 3 minutes. The finance minister was eloquent in her speech, and promises were again shabbat here. So the idea was to repeat in different ways the very same modest guarantees. The country has the right to ask everybody in the government what has happened to the earlier guarantees. Guarantees on employment, guarantees on the poor, guarantees for the women, guarantees for the housing, for healthcare. All the guarantees are forgotten. They are dead and lost on the states. Again, the PM is traveling all over the country and repeating the guarantees. The Parliament also,
they make every opportunities useful for them to repeat the guarantees. The finance minister, I really love her and respect her, but out of compulsions of politics, she is also repeating the same guarantees here. But what has happened to it? Food subsidy, it was mentioned here, cut. For the agriculture sector, all the benefits are cut. For the fertilizers subsidy, it is cut. For the common man's health care, again cut. And this government doing this kind of cut on the poor, the country can ask, whose government is this? This is a government of the super rich. This is a government that always forgets the rights of the workers and the poor. And the government is continuing with its promises. So on 16th of February, the country will witness a burnt by the rural poor. On the same day, a strike will be there by the workers on sectors of industry. That means the country is on revolt. So today, the Kerala people have come here for a big strike on the Jantar Mandir. Yesterday it was Karnataka government came here. Yesterday the PM told here that we are dividing the country to north and south. No, we are unifying the country as one and one. From north to south, east to west, the country has come together to fight against the norms and rules of the government of Modi-led government. That government is not for India's unity. Sir, Kerala is often being treated in a very bad way. Our rights are being taken off. All the figures that our Honorable FM repeats here are far from the reality, sir. Far from the reality. Whatever we achieve as a state, we are now being punished for that. Give us our due share. We have a right. We are part of India. For that right, we demand our share from the government of India. But the government of India telling shabby reasons, which are unfounded, and telling that we have given, where is that money? You have given for big people. And your interests are very known to everybody. This is the government of Adani. Adani government cannot be justified for the poor and for the nation. We stand for... Thank you, Mr. Richard. Thank you. Vandana Chauhan ji. Not present. Dr. Ashok Kumar Mittal. माननीय सभापति महोदय जी, धन्यवाद कि आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने की अनुमति दी। 4 minutes. थैंक यू जी। सर, चर्चा में बहुत सारे सदस्यों ने बात की कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो एप्रिशिएबल है और हर भारतीय को इस पर गर्व है। और मैं हर भारत सरकार को और देश को, हर नागरिक पर इस बड़ी अचीवमेंट के लिए बधाई देना चाहूँगा। सर, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी तक अनअटेंडेड हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान भारत सरकार का आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 जनवरी 2019 को इंडियन साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए देश को एक नया नारा दिया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में उन्होंने जय अनुसंधान जोड़ा। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो उस नारे का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दिया गया। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में स्पीच के दौरान इस नारे को दोहराया और कहा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे गए हैं, जो कि सही है। लेकिन इस पे एक मेरी माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो इस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम खर्चा कर रहे हैं वो जीडीपी का सिर्फ 0.7% है। इस स्मॉल खर्चे से हमने दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, चाहे चंद्रयान है, पर थोड़ा सा खर्चा इस तरह बढ़ा देंगे तो शायद हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अनुसंधान के जरिए दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन पाए, नंबर 1 कंट्री बन पाए। सर, कुछ और विषय हैं। हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, लेकिन सर ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की रैंकिंग में हम 164वें देशों में से 108वें नंबर पर हैं। सर, हम बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की। सर, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों में से 111वें नंबर पे हैं।
सर, हम बात करते हैं युवा शक्ति की और डेमोग्राफिक डिविडेंड की। मित्तल साहब, सर, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन तैयार करता है? क्या ऑथेंटिसिटी है सर? क्या क्रेडिबिलिटी है? जी जी। क्या वो कैलिब्रेशन करते हैं? जी जी। अपने को कुछ सोचना पड़ेगा। जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, जी जी। इन दिस हाउस वी कैन नॉट जनरेट एन इकोसिस्टम taking cue from just any report. Anyone in any part of the globe can calibrate us. We are not subject to calibration by anyone and everybody. ठीक है सर। We have to look at our home. जी जी। We know the situation about hunger. जी जी जी। There is absolutely, just see the position which has been reflected. जी। Please go ahead. Thank you. सर, मैं फिर हम खुशहाल किसान की बात करते हैं, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से 50% एग्री होल्ड्स पर कर्जा है और एवरेज कर्जा जो है 74,000 रुपये का है। सर, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन अभी भी हम चीन से इंपोर्ट हमारा 14% से बढ़ गया है, जबकि चीन के एनवॉय ने भी कल ये बात कही है। सर, हम बात करते हैं टैक्स भरने वालों की संख्या 7 करोड़ से ऊपर हो गई है, लेकिन सर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो अभी भी सिर्फ 6.11 है, जो कि OECD कंट्रीज की औसत 34% से भी बहुत नीचे है। सर, हम बात करते हैं रिकॉर्ड FDI की, प्रशंसनीय है, लेकिन हमारा एक्सटर्नल डेट पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। सर, 2014 में जो 55 लाख करोड़ था वो 183 लाख करोड़ हो गया है। सर, हम बात करते हैं सबका विकास सबके विश्वास की, लेकिन सर हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो के शेप्ड है, जिसमें सिर्फ 5% वेल्दियस्ट लोगों के पास 60% वेल्थ है। सर, आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, सर आयुष्मान भारत की, लेकिन सर हमारा स्वास्थ्य बजट सिर्फ 94 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का सिर्फ 1.6% है। सर, हम लोगों ने बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, खूब बनाए हैं, लेकिन सर ऑपरेशनल एयरपोर्ट कितने हैं और उसकी परिभाषा क्या है वो अभी तक सर समझ नहीं आया हमें। हमारा जलंधर में आदमपुर एयरपोर्ट ऑपरेशनल की कैटेगरी में आता है, लेकिन 3 साल से कोई उसमें उड़ान नहीं भरी गई है। सर, इन सब बातों के बावजूद सर मैं निराश नहीं हूं और मुझे मालूम है सर हम सबको मिलकर काम करना है और भारत को एक सुपर पावर बनाना है और विश्व गुरु बनाना है, और मेरी आने वाली सरकार वो किसी पार्टी की भी हो, मुझे उससे उम्मीद है कि वो इन सभी समस्याओं का हल करेगी। और सर अंत में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ जो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहे हैं, गरीब आदमी, किसान, युवा, महिलाओं के बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं और उनकी तरफ से इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे सपनों की उड़ान आसमां तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमां तक है, कैसे हार मान लूं और मैं थक कर बैठ जाऊं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक है, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमां तक। धन्यवाद सर। श्रीमती निर्मला सीतारमण टू रिप्लाई द डिस्कशन। Thank you, sir. So thank you very much, sir. I understand a total of 33 members have spoken, and today, distinctly only on the Finance Commission, Finance Bill, about 9 speakers have spoken. I thank all the members who have contributed to this debate. Although the budget speech and the Finance Bill all come with the spirit of vote on account and interim budget, there are aspects on which honorable members have spoken. Whilst just highlighting some features of the interim budget and not going into greater details into it, I'll try to respond to as many members who have spoken on the subject. Sir, the budget, and equally, we are talking about the interim budget of Government of India and the supplementary demand for grants for the earlier year, for the current running year 23-24 for the Government of India. And we are also dealing with
J&K's budget, interim budget for a part year for 24-25, as much as we are talking about supplementary demand for grants of J&K. So we are dealing with 4 plus the Finance Act. Finance bill, which on being passed will become the act. So totally about 5 different legislative things we are talking about. Sir, the highlight of the interim budget is that we are indicating clearly the emphasis given on capital expenditure for one, immediately after COVID to revive the economy, and 2, subsequently after a year or 2, to sustain the good pace at which Indian economy is growing. The route that we are taking is spend on public infrastructure creation, asset creation, because that, as opposed to spending on revenue expenditure, gives you better returns for the investment made. I was a bit astonished to hear Honorable Member Jawahar Sarkar probably confused capital expenditure with expenditure on capitalists. So I'm sorry, capital expenditure is spent on creating assets which can be used by all citizens equally, and their common infrastructure which improves the ease of living for everybody and gives access to farmers, access to small manufacturers to reach the nearest port of call or railway station or market yard in a better way, in a smoother way, in a short time. So it's a bit worrying, and that is because I presume somebody who's had a long tenure in bureaucracy, by mistake, I would like to believe, mixes up capital expenditure with capital. No. Sir, I've heard No, him. He should allow me to speak now. Please. No. This is becoming Mr. a bit too much. I will not allow it. We have to believe in some procedure. Please. Yes. And both here, when wrong is being said. Sir, this kind of distortion to certain terminologies which are used in the budget and which have been used even earlier cannot be, I'm sorry to submit, you may correct me, sir, cannot be without an intent which is not completely bona fide. This is not acceptable at all. And if ideology drives us to say it, please let us have them say that. Honorable members, I respond to. Now, Honorable Member Randeep Surjewala has raised a lot of relevant, pertinent questions on agriculture. I'll certainly give him as much answer as is possible by me. But to give a twist, even tongue-in-cheek twist, in an august house like this, I want the chair to take a view on it, because ultimately all of us are seeking answers, trying to give solutions, and if the answers are not up to it, I'm well ready to accept corrections. This type of twisting on words worry me a lot, because all of us are sitting and hearing one another with seriousness. We want to address it. So, sorry, sir, to begin like this. Sir, therefore, the highlight of the interim budget, being interim as it may, is to underline the fact that, like the way we, during recovery, and post that, to sustain a good growth for the economy and to have a greater multiplier effect, so that without us having to spend on revenue, which gives less return for a rupee, and I'm basing it on a RBI study, if for a rupee spent on revenue expenditure, you get hardly 0.98 only, meaning for every rupee spent, not even 98 paisa return comes. Whereas when you spend on capital expenditure, for every rupee spent, in the short duration, you get about 1.46 paisa, 1 rupee 46 paisa return, and in the medium and long term also, there is return. And therefore, the route of spending money through the public investment in infrastructure
gives us greater returns, and in situ, it creates jobs. Where the projects are being done, where money is being spent, public money is being spent, jobs are created, local services also benefit, and that ripple effect in that ecosystem can have greater impact on the neighboring economies, which are smaller pockets which can become like ripples in a pond. Therefore, this route globally has been adopted as one sure short way in which you can get sustainable growth, and we are seeing it, and therefore, even in this budget, we have committed to spend about 17% higher than even the RE of 23-24. The current year's RE being whatever it is, we are spending 17% more for the coming year. Then, sir, that same outlay is higher than the projected GDP growth rate of 10.5% during the next financial year. So if you're projecting a GDP growth rate, the growth in the capital expenditure for creation of public infrastructure is growing faster than the real GDP growth itself, the projected number. Sir, with the capital expenditure being the focus, equally, we've, in the last 3-4 years particularly, we have made sure our debt management and also the overall management of the fiscal is done in such a way that we honor the glide path for the fiscal deficit that we had given in 21. So, if the glide path for the fiscal deficit had to take one particular trajectory and come down in a particular fashion, we have complied with that. That was approved by the honorable houses and in the parliament, and we've complied with that. This year, actually, I could have stopped at, oh, we've reached 5.9, that is complying with it, that is fine. No, but even further, we brought it down 1 decimal point further down, and instead of 5.9 this year, we have given a fiscal deficit number of 5.8%. Similarly, for the forthcoming year, where it could have been 5.2, we have made an effort to bring it down to 5.1 without in any way compromising on expenditure, particularly on welfare and also taking care of the rural economy. So these 2 points I would like to highlight for the benefit of the House. And when I said that we are making sure that the fiscal deficit will be managed without hurting any of those projects which are important, I just want to quote a selection of projects and schemes which will showcase that the cut has not happened at all in any of this, that I have to make sure that the fiscal deficit is managed. I'm trimming down on these. None of that. So, for instance, the Department of School Education and Literacy, BE budgeted estimate of 23-24, the current year during 1st February 23, had 68,805 crores. What we have given in the BE now in the interim budget for the coming year is 72,474. It has not come down, it's gone up. Then the Department of Health and Family Welfare, 86,175 was the BE. Now it is 87,657. It's not come down, it's gone up. Ministry of Minority Affairs, 3,098 crores, BE 23-24. Now it is 3,183 crores. Department of Rural Development, which is so significant for many of the rural-based projects, 1,57,545 crores in the BE 23-24. Now it's gone to 1,77,566 crores. Tribal Affairs, 12,462 BE, 13,000 BE now. Department of Social Justice and Empowerment, 12,847 crores BE, 13,000 crores now. Ministry of Women and Child Development, 25,449 crores BE 23-24. Now it is 26,092 crores for the BE of the coming year. Capital allocations, sir, the major ones, which
generate employment, which create assets, which give better market linkages for farmers, and which also provide better connectivity so that ease of living also is highlighted for common citizens. 2,58,606 was the BE allocation for road transport and highways, whereas now in the interim budget, it is 2,72,241 crores. Railways, 2,40,000 crores in the BE. Now it is 2,52,000 crores. Defense, 1,71,375 crores. Now it is 1,82,241. States were given an amount with interest-free proposition, and also that it will be given for 50 years, where they don't need to service the loan, nor do they need to give any principal back. 1,30,000 crore was done in the BE 23-24. We have retained that 1,30,000. So states are actively participating in asset creation with public money. This money is given by us. They themselves would also invest in capital expenditure. So over and above what the states put, that's not a condition, but over and above what they put, we have allocated this much, and they are, as per a formula given for the tax devolution, so is the formula used for this also, so that every state gets a bit of the capital expenditure allocation. Sir, the allocation for major flagship schemes, PM Kisan, about which Honorable Member Surjewala spoke and about which I will certainly reply him, but I want to tell you, 60,000 crores was allocated in the budget estimates 23-24. It continues to be 60,000 even now for 24-25. PM Awas Yojana, rural, 54,487 crores is now 54,500. PM Awas Yojana Urban, 25,103 is now 26,171 crores. Jal Jeevan Mission, 70,000 crores in the budget estimate, now 70,163 crores. Rural Employment Guarantee Scheme, the MNREGA, 60,000 in BE 23-24. Now it is 86,000 crores 24-25 BE. Gram Sadak Yojana, 19,000 crore is kept at 19,000 crores. Samagra Siksha, 37,453 is now 37,500. PLI schemes, 8,965, now it is 16,021. So no major scheme, no major flagship scheme has been curtailed, nor have we reduced the allocation. If I talk about the supplementary, sir, this is the second and the final batch of supplementary for this year 23-24. And in that, primarily, there are 71 demands, 1 appropriation. But where does this money go? The supplementary demand for grant, if the House passes it, where does this money go? 3,000 crore, that is, 3,000 crore goes for nutrient-based subsidy scheme for P&K fertilizers. Department of Food and Public Distribution for PM Garib Kalyan Anna Yojana gets 9,231 crores. Defense Services for their revenue expenditure, which is for meeting additional expenditure towards pay and allowances of armed forces and other establishment expenditure requirements, such as stores, transportation, and ECHS, get 13,548. Department of Economic Affairs gets 5,000. That is for transfer to Senior Citizen Welfare Fund. Transfers to Jammu and Kashmir, they've asked for 3,000 crores. That is for essentially meeting additional expenditure towards central assistance to the Union Territory for bridging their resource gap. So these are the features, sir. The Jammu Kashmir interim budget and also the supplementary demand for grants, I just want to highlight. The vote on account has come for seeking the approval of the House for 59,364 crores.
Their BE for total 24-25 is 1,18,728 crores. Of that, they have sought the vote on account for 59,364 crores. The central government will provide 41,751 crore to the government of Jammu and Kashmir for the year 23-24, and that is the current year, and 37,278 crores in the year 24-25 as assistance to the Union Territory. And their supplementary demand for grants, which I for a moment said from our books, is 8,713 crore, and that is mainly for debt, repayment of debt, and power procurement. So these are the highlights of all the four budgets, interim and supplementary, Government of India and J&K. Sir, I'll also for a moment speak about what are the main features of the finance bill this time. With that, I would have addressed the features of all the bills. The main feature of the finance bill, with all the taxes remaining the same, we have not changed the rates at all, is there are certain changes to the TCS regime, the tax collection at source regime, which were made in the Finance Act of 2023. And thereafter, some changes were announced through a press release as a matter of clarification on 28 June 2023. But regarding that clarification was regarding the remittances under the liberalized remittance scheme, the LRS scheme, and on sale of overseas tour packages, the program packages, travel, tourism, tour packages. In line with the announcements made, amendments have been proposed in the finance bill, which is an announcement already made. The mention was already made in the last year's budget, but this is the budget through which, this is the Finance Act bill through which we are coming up with those changes. The second one, sir, which is worth noting, is the startups. Certain startups are eligible for some tax benefits if they are incorporated before 1st April 2024, that is this year. The period of incorporation of such eligible startups is proposed to be extended by 1 year. That is, if they register or incorporate their company by 1st April 2025, they'll still be eligible for those tax benefits. So we've just given that one extension. Similarly, for units located in the International Financial Services Center, we had earlier said similarly, if they are established before 31st March 2024, those tax incentives will be available for them. But now we are extending them also till 31st March 2025. That's a second change which is being brought through the finance bill. The third one, sir, is an extension again of limitation date of investments made by the sovereign wealth funds and pension funds, the investments being made in India by the sovereign wealth funds and pension funds also attracted some benefits. Those are also, that is, if they invest in infrastructure sector, they are also getting extended till 31st March 2025. And the last one, which is of very important consequence for middle class, small taxpayers, and that is a very big issue which I want to highlight. It is proposed, sir, to remit small unverified demands up to 25,000 rupees, 25,000 rupees, which relate to financial year 2009-10 and also earlier years. Just to remind honorable members that some months ago, there were a lot of discussion about some tax claims are being made which pertain even to 1962, 1970, 1980. How come the tax is being claimed now for those past several years? So those are getting addressed in this, and there are demands pertaining to the financial year 9-10 and also pertaining to the year 10-11, 2010-11. Similarly, the demands for 10-11 up to 10,000 rupees are also proposed
to be withdrawn. So it will be a big relief for small taxpayers who are being, for very long years, being pestered for some dues, some 500 rupees, some 1,000 rupees like that, accumulating to 25,000 rupees, and in some other cases 10,000 rupees. So these are the only changes which are being brought in this finance bill, and no tax rates are being amended. So therefore, the discussions which are being held here on these highlighted features and other features is what I want to respond to. So the particular discussion on by Sri A.D. Singh and also Imran Pratapgarhi. I can't see both of them, but never mind. I'll respond to them, sir. Although in Lok Sabha, if the member is not present, I'm not expected to answer, but I will highlight some of the points because many other members may also be interested in knowing the answer. So the labor force in the country has increased from 49.8% in 2017-18 to 57.9% in 22-23. Rural areas, the labor forces increased from 50.7% in 2017-18 to 60.8% in 22-23. The workforce in the rural areas increased from 48.1% to 59.4% by 22-23, sir. So for the rural areas, unemployment rate has actually decreased from 5.3% in 2017-18 to 2.4% in 22-23. So I want this to be laid on the table for clarity, so when members raise the issue, this is something which I would request them to take cognizance of. Similarly, sir, women labor force participation has risen from 37% to 37%. Women labor force participation has risen to 37% in 2023. It is a substantial increase from 23.3% recorded in 2017-18. So in a matter of 5 years, that is where we have gone. And it's also a surge. It is a surge of 13.7% points during the last 5 years. Female enrollment in higher education has also increased by 32% since 2014-15. So there are facts which all of us should take cognizance of, even as we talk of our Indian economy. There's more work to be done, I grant that, but there are significant progresses being made. We need to take cognizance of it, sir. So one of the members, again probably Sri A.D. Singh and Sri Imran Pratapgarhi, had spoken about Lakpati Didi, and in that about women's participation. I want to highlight the fact that currently 83 lakh SHGs with 9 crore women working across the country with empowerment and also with self-reliance. In this interim budget, I have announced to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. That is also with government assistance. We are going to train them in using very many marketing techniques and also to work with them to make them part of GEM portal or market their goods through any of the ONDCs, or even if they are prepared through the SHG, give them training for using drones which can be used in the farms and the fields in the rural areas. Sir, Sri Santanu Sen, I can't see him here, had raised this question about retail inflation, sir. Retail inflation, I'm glad to say, has declined. In fact, today, one of the newspapers very clearly showed how the cost of thali, a plate of food, has actually come down, and come down particularly for not the vegetarian, but those who have non-vegetarian. So the cost has been calculated, and today the media carried it, but I'm here happy to say
that in retail inflation has declined from an average of 6.8% in April-December 22 to 5.5% in the corresponding period of 2023. The RBI also had a monetary policy committee meeting, and even they have been indicating that inflation is coming down and it is well within the tolerance band. This is not the first time they're saying it. Last time they met also, for that period, they did say it. The core inflation has declined from 5.1% in April 2023 to 3.8% in December 2023. Sir, Shri Santanu Sen also spoke about Global Hunger Index. For the benefit of the House, I want to submit humbly. Global Hunger Index is not a balanced approach to measuring hunger. Let's be conscious of it. It is I would like to humbly submit, as much as it is said that you can't doubt those agencies, the very proposition of looking at data given by anybody, just as the data given by Government of India is also subject to peer verification. That is the whole idea of data, observers, economists, statisticians looking at data, just as we critique government data. Nobody is beyond criticism. Nobody is beyond critiquing. So, no, let me finish my answer, sir. I've heard every one of them. Honorable members, sometimes it is so ridiculous, so farcical, that some countries find, according to such calibration, that they are ahead of India. And they are worried. They are surprised. We need to be cognizant of it. How can we allow any organization to calibrate us, generate an ecosystem, generate an impression, and then we have illustrious members with education abroad, indicating to us we must believe in them. Very frankly, this House, I appeal to all the members, this House needs to take note of the ground reality. We must come out of that servility that any agency, without examining that, will indicate where we are, how we are. My health has to be assessed by my doctor. Someone there will say my health is not good. Sir, this is very dangerous, let me tell you. The honorable member is not here. Mr. Kapil Sibal has found a new role. And the new role is of a journalist. Now, distinguished senior advocate becomes a journalist and then goes to a former governor and then evaluates my health, examines my spine. Though the act, of course, is highly despicable, I do not want to go into it, but can we allow just anyone to engage into these activities? Within the country, we have enough bodies. I do want there must be proper statistical evaluation, a robust mechanism to evaluate our health and economy. But surely we cannot place ourselves in the hands of those bodies. Already enough damage has been done by them. Every time India's rise is there, trust me, do some homework, and you are capable of doing it, ma'am. You will have enough time also after some time. What I mean to say, we must engage objectively. One second, take your seat. Objectively, passionately. I am not looking at it from political partisan prism. We must learn to have our robust mechanism. We will evaluate ourselves, and then we'll respond. Anybody, anywhere in the globe, working inspired manner, motivated by someone else, funded by someone else, says it, and we say gospel truth. Sorry, we'll have a debate in the next session on this. We will not have this calibration. Honorable Finance Minister. Thank you, sir. Sir,
When I say it is not on a balanced approach to measuring hunger, I'm giving the reasons why. Please. Take your seat. Nothing will go on record, John Bitas. Take your seat. Sir, I'm stating as to why, when I say it's not balanced approach, I'm stating my reasons. The reasons can be rejected. But I, as much as any other member, would also want to place on record, because all of us speak responsibly. We bring in data. It is up to the House to hear it and contradict it or accept it. But please hear first. Sir, it measures multidimensional nature of hunger by just relying on 4 indicators: undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. It is not a comprehensive index, as 3 of the 4 parameters focus only on children. The sample size of the study is only 3,000 households. IMR, infant mortality rate, is falling in the country from 40 to 40.7 in 2015-16 to 35.2 in 2019-21. This is the NFHS survey. Sample size is 6.37 lakh households. So, we need to also please look at what is the basis with which the study is coming out. Another, as per the NFHS 5, there has been a broad-based improvement in indicators relating to child health and nutrition, with a decline in the proportion of stunted, wasted, underweight children under the age of 5. So, a study which we are doing, and that is based itself on 6.37 lakh households. I'm putting this point out, and I'm sure each one of us, as members who have our own experience in public service, can please look at this and have a peer review done. No objections. And it is not as if everything which is against the government we would reject. These are data which all of us are going to use. Today, I use data belonging to period when you were in government. Absolutely common thing to do. I have no objections, but my reasons are these. And then, sir, India has adopted a universal food security framework to protect its citizens from hunger through PM Garib Kalyan Anna Yojana. In the BE of 24-25, towards food security, 2.05 lakh crores has been given. This covers 80 crore beneficiaries. They are getting, it is definitely the responsibility of the government. It's not as, oh, I'm giving. No, not in that sense. But we want to be sure that nobody is left out. But sometimes we are critiqued for that as well. Oh, which means you are admitting 80 crore people are poor. Oh, please. You can't have it both ways. The data was then, and based on that, we are giving it. Somebody else's data, which is based on 3,000 household samples, is reliable. But that data which Government of India gives, because it's based on 6 lakh households or more, is not reliable. Anything which is critiquing government is good enough. Anything which is actually telling the truth about the government, rejected. Sorry, hypocrisy nahi chalegi. Ye hypocrisy nahi chalegi. Sir, furthermore, under PM Poshan scheme, in BE 24-25, the amount has been increased to 12,467 crores. The primary objective of the scheme is to improve the nutritional status of children studying in classes 1 to 8 in eligible schools. So that is one thing, sir. There were questions about inflation, how we are managing it. I've been answering questions in this House, but I would just want to highlight that in order to enhance access to food, the government has taken very critical steps
For instance, to make available atta, to make available dal, and to make available onion, and to make available rice. Bharat branded atta, Bharat branded dal, and Bharat branded rice are now available in the market. It's been available for some time. I'll give you the data for it, sir. Bharat atta, 27.50 rupees, meaning 27 rupees 50 paisa per kg. I'm not just saying the number. Till now, 2.37 lakh metric tons have already been sold in the market. People have bought it. As on 28th January 2024. So it's not as if we've made a provision and people are not buying it. People are buying it at that price. To that extent, the prices are cooling down. Bharat dal, 60 rupee per kg for 1 kg pack, or 55 rupees per kg for 30 kgs bag. And in that, 2.97 lakh metric tons as of 31st January 2024 have already been sold in the market. Bharat rice, only launched a few days ago, gives rice at 29 rupees per kg. Onion is being sold at 25 rupees per kg, and even onion, as of 3rd February 2024, 3.9 lakhs metric tons Honorable are already members, sold. now it is 6 p.m. The Business Advisory Committee has already recommended that the House may sit beyond 6 p.m. to transact the business listed for the day. Therefore, the time of the House is extended beyond 6 p.m. till the disposal of the business listed for today. Honorable Finance Minister. So similarly, tur is being imported, urad is being imported, just so they have been made free category for import so that our market does not fall short of pulses. And this extension of free category is now available till 31st March 2025. So any trader can import and supply to the market. Similarly, tur dal, 8.79 lakh metric tons has already been imported in the year 2023, 0.38 lakh million tons in the month of January 2024 itself till January 20th, and they are mainly being imported from Mozambique, Myanmar, Tanzania, Sudan, and Malawi. We also import but small quantities from Kenya and Nigeria. Now, India also imported masoor dal so that the prices will come down. 15.14 lakh metric tons of masoor from different countries, sir, Australia, Canada, and Russia, in the year 2023, and 0.84 lakh million tons in the month of January 2024 have been imported. Similarly, urad has also been imported. So for the steps that the government has taken to contain inflation and give essential goods at affordable price is through various different means. By branded products which are marketed through NAFED and other mother dairy-like stores, or by open market operations, by releasing grains which are in the buffer stock, or allowing imports to come into this country so that prices can be contained. Sir, on the transfer to states, again, Honorable Member A.D. Singh, Shantanu Sen, and Sri Girirajan, I don't know if they are here, but the reply, I just want to be sure. Devolution, as is recommended by the Finance Commission, is 100% followed by us. There is no way that any violation has happened. I have followed it to the last word. I repeat, whatever was recommended by the Finance Commission has already been given as per time, and it will be given so till the time of the Finance Commission. In BE 24-25, sir, total resources being transferred to states, including devolution to the state share, devolution of the state share from the taxable pool, grants and loans, releases under the centrally sponsored schemes, are all put together expected to be
22,22,264 crore, which shows an increase of 4,13,848 crore over the actuals of 22-23. This is a 47%. This is 47% of the budget of 24-25. So payments are happening to the states in time, and there is no due held back. I want to be sure that particular data for Kerala and for Tamil Nadu are mentioned here, sir. Tax devolution between 2004 and 14 in crores for Kerala was 46,303 crores. 4 to 14, 10 years, 46,303. That was the transfer to Kerala. Between 2014 and 24, and I'm here talking about figure ending 22nd December 2023, just 2 months ago. 46,303 for the 10 years between 2004 to 14. 2014 to 24, only up to December 2023, 1,50,140 crores. Kerala. The percentage change is 224% increase. That is tax devolution, sir. Grants and aid, and this is open for anyone to see. Transfer are all there. Reserve Bank is monitoring, and publicly government of Kerala can release the figure. Is this received or not? So I'm not just giving a number which cannot be verified. It's been received. Grants and aid from Government of India, 2004 to 14, 25,629.7 crores. 10 years between 2004 and 14. 2014 to 24, Prime Minister Modi, Government NDA, grants and aid from Government of India to Kerala compared to 25,000 something in these 10 years, 1,43,117 crores. So, compared to 10 years of UPA, 9 years of NDA, 458% increase, or 5.58 times increase. So that's aid, grants and aid. Sir, release under the special assistance to states for capital expenditure, which we commenced from 2020-21 because of post-COVID. As I said, we are also having capital expenditure funding given to states, 50-year interest-free. 2020-2021, the first year when we started post-COVID, 82 crores. 21-22, and this, no Finance Commission has asked me to do. Finance Commission has not said, you have to give money to the states for capital expenditure. No. Because the recovery of the economy and sustaining the growth of the economy was very high priority, and Prime Minister's guidance to me was, you should give money for the states to do their own projects. And therefore, the first year was 82 crores to Kerala. The second year, 21-22, was 239 crores. 22-23 is 1,903 crores. So, all this has been released. Kerala received all this. In addition, rupees 18,087 crore have also been provided as additional borrowing to the state in 2020-21 in view of the pandemic. So, this is absolutely clear that there's no reduction for Kerala. I want to humbly submit. Now I move to Tamil Nadu, sir. Tax devolution, 10 years, 2004 to 14, 94,977 crores. 2014 to 24, 2,77,444 crores. I don't know if any member from Tamil Nadu is here. Sorry. क्षमा कीजिए.
Sorry, I didn't notice. Sorry. Notice. So 94,977 during 2004-14 is now 2,77,444 as of December 22nd, 2023. We still have months to go. That is 192% increase till December 2023. Now again, the 10-year period, grants and aid from Government of India, 57,924.42 crores during 4 to 14, now 2,30,893 crores. 4 times increase, 300% increase, 10 years of UPA, 9 years of NDA. The release of special assistance for Tamil Nadu. In the first year, they didn't take it. The second year, which is 21-22, 505.50 crores have been given for capital expenditure, interest-free, 50 years, don't worry, servicing it. 2022-23, 3,263 crores have been given again for Tamil Nadu as special assistance, 50-year, interest-free. 23-24, the current year, as on 11th December, 2,643.65 crores for capital expenditure, interest-free 50 years. So Tamil Nadu, Kerala, the figures are before you. It's okay. Come on, Mr. Sambidurai. 1 minute. You are a senior man. Sir. Please. No, please don't shout and please. Okay. Sir, two things. I want to. Mr. Muralidharan, you are joining them. Sir, I want to, first of all, this is the kind of apprehension building. This is. Please. Yeah, please. Mr. Lamaram Karim, Sir. You are a senior member, sir. Sir. Please. Oh. Please. Sir. Please. Sir, amazing. Sir. Come on. 1 minute. Ma'am, 1 minute. Madam. Sir. There is a problem. You are not on your seat. Even if I want to show indulgence, I can't show. Sir. No indulgence on your seat. Sir. Sir, Honorable Member Elamaram Karim is a very senior member. Very senior member. Yes, I think no dispute on that. Sir, and I have 2 observations to make before I comment. These are not data which I'm just releasing for the first time in this House. There are parliamentary questions. There are budget documents which are put up. Budget documents have breakdown by states. How much every state got under capital expenditure, 50 years, interest-free, everything is there already. The reason why I'm saying only Kerala is because Kerala, Karnataka, Tamil Nadu have in the course of discussion raised it. If they were interested in it, I don't think it will take much of a time. I'll get it and read it. They can have access to it. Sir, now I give you my comment, if you permit me. These are not amounts determined because I like one state, I dislike the other state. These are the percentages given as per Finance Commission for tax devolution. The same amount, same percentage is used when I have a lump sum which I want to give for 50 years for capital expenditure, interest-free to all states. How do I divide that among states? The formula is the same formula which I use for tax devolution, also for dividing this money, which is purely not Finance Commission's recommendation, but Government of India wants to give. But the formula, Elamaram Karim ji, through you, I request, please John Britta should allow him to hear, I'm answering him. So kindly, sir, Elamaram Karim ji should kindly appreciate. It is not my whims and fancies. Honorable Finance Minister, have you ever invited Elamaram Karim for a cup of coffee? No, sir. Is there any risk element in it? Sir,
I didn't invite, but I was very happy to receive him several times in my room with chai or coffee if they chose, whatever they choose. Karim has, honorable member, has come and met me several times. So now that you are slightly indicating, I'll invite him for a coffee as well. Mr. Karim is cream of the house. Oh. So, I want to dispel this myth, sir. Oh, my state is receiving less, that state is receiving more. I have no role to play in that. It is a number determined by the Finance Commission, which is for tax devolution. The same formula we have taken for something which is not under Finance Commission, which we want to give to the states, but there also we don't want any subjective element. The formulation is as given by the Finance Commission. So why would Kerala get something different from what it gets under the tax devolution, even on this? So comparing Gujarat, please, it's available in public domain. Go see it. Or I can always send it to honorable member. It is the formulation. I have 100 rupees, I have 1,000 rupees, I have 50,000 crores. The formulation is one, given by the Finance Commission. Sir, honorable member Randeep Surjewala ji had quite a few issues on agriculture. I'm sure the Agriculture Ministry will be able to give him detailed point-by-point answers, but somewhat some of the questions which he raised, I would want to address it as much as I can. I admit here that maybe some issues I may not be in a position this very minute to answer him. I will request the Minister, Agriculture, to respond to him, because those are issues which are very important and we need to answer it. First question, sir. I was surprised that this was raised, but I will answer it. PM Kisan Samman Nidhi. Why is the number originally 12-point-some crores? Why was an answer given by the Finance Ministry saying it is 9.5 crores? My number understanding in Hindi, in English, may be a bit distorted, but I'm approximately saying the number that he said. But idea being, you started with 12 crores. One of the parliament replies said 9.2 crore, 9.5 crore, say something. And then there was also this thing about now you're actually paying only 8-point-some crores. Essentially, it's trying to say you started with 12, but you're not giving 12. Quite a few has dropped out. In fact, I was carefully listening to him. When you started saying it was 14 crores, then when the last payment was made by Honorable Prime Minister in 15th November 2023, it was 8.93 crores. Then Finance Minister's response, Finance Ministry's response was 12.5 crores, or 3.8 crore gayab ho gaya.